it early on, but batters, they will enjoy. Okay. Let's find out from 70 days older from the start of the tournament, Ali Yunus. He's got the two captains. At the Multan Cricket Stadium. It's the grand final, it's the main event, and two fantastic teams have made it here to this day. I've got the two captains with me, Khalid Usman for KP, Saud Shakil for Sindh, and Iqbal Sheikh is our match referee. Seems like Khalid Usman will flip the coin. Tails is the call. It is head. Heads it is. Khalid Usman, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। इस सर्फेस को देख के आपको लग रहा है कि यही सही डिसीजन है? जी बिल्कुल, हमने एक फास्ट बॉलर ज़्यादा खिलाया तो इसलिए हम बैटिंग करेंगे पहले और अच्छा टारगेट सेट करेंगे। बड़ा मैच है तो स्कोर ऑन द बोर्ड होना चाहिए। बड़े प्लेयर्स आपकी इस टीम में शामिल नहीं थे, फिर भी आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। कैसे देखते हैं इस जर्नी को, इस टूर्नामेंट की? जी बिल्कुल, हमारे टीम का माहौल जो है बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारे जो कोचिंग स्टाफ है और सारा जो है वो बहुत बैक करता है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमारी टीम को। ओपनिंग पार्टनरशिप रिहान आफरीदी जब से आए हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, यही मिसिंग था पिछले मैचेस में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बीच में भी रन नहीं हो रहे थे जो लास्ट मैचेस में हुए, तो अच्छा है हमारे लिए। आज के मैच की टीम न्यूज़? एक चेंज है, मास की जगह इमरान खान खेल रहा है। राइट, ऑल द बेस्ट खालिद उस्मान। थैंक यू। सर, टॉस हार गए, जीतते तो क्या इरादे थे? जीतता तो मैं पहले बॉलिंग ही करने वाला था आज। आपका प्लान रहा है ये हमेशा से कि आप चेस करना प्रेफर करते हैं, क्या खास वजह है इसकी? ऐसा है कि बस मैं अपनी बैटिंग को बैक करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है उनकी एबिलिटीज़ पे, तो इसलिए मैं अपनी बैटिंग को बैक करता हूँ। कल बहुत टाइट मैच हो गया, क्या मोराल है? आप काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा टीम में? ऑब्वियसली जब आप कल इस तरह का मैच जीतते हैं तो मोराल आपका बूस्टअप होता है। फाइनल मैच है और उसमें तो मोराल बूस्टअप की ज़रूरत नहीं है। दो प्लेयर्स की बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहेंगे आप, साइम अयूब की और अनवर अली की। जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड अप किया कल के मैच में, तो एज ए कैप्टन कितने सेटिस्फाइड हैं आप? फुली सेटिस्फाइड हूँ उन दोनों से। जिस तरह साइम अयूब खेल रहा है, एक्सलेंट बैटिंग कर रहा है वो, और जिस तरह अनवर भाई ने फिनिश किया, यही रिक्वायर्ड है उनसे आज भी। और आपकी टीम न्यूज़ आज की? सेम टीम है भाई। राइट, ऑल द बेस्ट साउथ। थैंक यू। राइट, द न्यूज़ इज दैट Khyber Pakhtunkhwa has won the toss and they will be batting first. Not a bad call actually. In a final, bat first and put scoreboard pressure. Strange or surprising change. Imran Khan Jr. has joined the team, and well, it should be rather Mohammad Imran, and they've left out their frontline spinner. So that means that the captain will have to go. Well, it is surprising for me because as I was talking earlier, you need spinner to calm things down and slow things down. I think probably they could have left Abbas Afridi and got Maz in, because the other night we saw how Zayed turned the things around for Sindh. So it's a brave call. Let's hope it works around. We actually hear Khalid Usman, he said he wants to bat first. Would you have done the same in a final? Given the fact that Sindh has chased it and they love chasing according to their temperament, that's a brave call. I wouldn't have done that. I would have put them in a slow sport where they could come in, bat and set a target, because in a final on the surfaces you're not sure what a decent or a surviving target is. Well, mind you, it was a record chase. Never had this big a chase in the history of National T20 since these 6 teams have been introduced. And then you weigh Central Punjab bowlers and KP bowlers. Is it the same thing they'll be dealing with while chasing today? I think it doesn't make a difference, because when you look at Sindh's batting lineup, they are very well prepared when they know what the target is. If you look at their middle order, they have their strengths. They love to come and bat. Even in yesterday, they knew exactly what they were doing. They targeted the first 2 deliveries, got the boundary and calculated it. So I don't think it would matter a lot. Okay. It's a double league-based tournament, so each team plays each other twice. And when these two faced each other, it's been 1-1. So it's hard to pick one winner out. Okay, so if you actually, now you've seen the pitch, we know now, we said the 160 odd is a good score for a knockout game, semi-final, final, but we saw 180 also happening. What's the score that KP should have in mind? Of course, 200 would be nice, but realistic one. Well, there are a lot of factors they need to take in consideration. Shadil never clicked, but he's a big factor. Saim as well. I think for a safer side, they have to go around 175, 180. Okay. All right. So here we are. Now, I'll show you the trophy one more time. So this is the trophy. This is what they're playing for. And we wish both of them best of luck, Marina and I and all our crew. We've enjoyed all the matches that have taken place. These two are the best sides, deserving finalists. Let's hope one of them wins it with a cracker of a game. Enjoy.
Hello, good evening, and welcome to the beautiful Multan Cricket Stadium for the final, the grand final between the two best sides, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh. It's been a fantastic tournament as far as the pitches is concerned. My friend Shah Faisal will talk more about it. You're absolutely right, Ali. We've seen some great cricket thanks to a lot of very good pitches being produced, and this one is no different. Slightly greener tinge of grass here, but it's pretty compact. The ball will slide on under lights. We've seen that happen last night. Play a little bit more bounce and carry, a little bit of something for everybody. You've just been fantastic with those pitcher posts, Shah Faisal. I must have to say that. The two umpires, shows up the Raza on your right and Zamir Haider on your left. This is the last time that we will be seeing Zamir Haider in action. He's had a terrific career as far as Pakistan domestic cricket is concerned. It's inside. They wanted to bowl first anyways, but they were invited by the KP side to bowl first. I have a feeling that this is what Sindh wanted, and they will be more comfortable at this time, chasing the score. That's how the sides look like, unchanged. Sindh side and one change for Khyber Pakhtunkhwa. Imran Khan Senior coming in place of Maaz Khan, the leg spinner. So they've strengthened their fast bowling. In Sindh, they've found their best 11. Inclusion of Asif and Anwar Ali really give them power at the back end of the innings. Sada Farhan and Rehan Afridi. Ever since Rehan Afridi has come to the side, the new look opening pair, and he's really took the initiative. Really batted well. Helped Sabzada Farhan take his time, and these two have worked very, very nicely for the Khyber Pakhtunkhwa side. Yeah, we see good people coming in. Just as we were coming, there were people coming in still. And that stand, that Fazal Mahmood stand and Imran Khan enclosure, people have come in numbers. They've been brilliant, this Multan crowd. Smile on Sabzada Farhan, and why not? He is the leading run getter of this tournament. And alongside his partner, Rehan Afridi. And since the time that he has come in, the fate has changed for KB side. There was a time when they lost a bit of way. They needed somebody like him up the order to comfort Sabzada Farhan with him. And he has delivered. Look at Sabzada Farhan's record. Wonderful. 750s, 100. The strike rate 118. The best of 102. That 100 did come in this tournament. Average is good. Strike rate on the up. He's a formidable T20 player. Plenty of noise. The crowd still pouring in. And this man has also been brilliant. Sohail Khan. Age is just a number. 154 wickets. He bowls in the power play. He bowls in the death. Last night, his 19th over was immense for Sindh's cause, and he still possessed very, very high quality of skills, both with the new ball and with the old ball. One slip to start off the things for Sohail Khan. There's a fielder at third, deep, and a deep square leg in place. Zamir Haider is making sure that everything is in place, because this is the big game. This is the final of Kingdom Valley National T20 Cup. This doesn't get any better than this. As Zamir Haider says, let's play. Nicely driven straight away. Excellent shot. Beautifully played. Driven through the covers for 4. What a wonderful start for Sabzada Farhan. That little green grass will invite Sohail Khan to pitch the ball up. He did get a little bit of shape, but it looked like just a floaty half volley. Too close to Sabzada Farhan. Square driven nicely. This is an excellent start for him. Didn't like it. Rightly so. We all know what Sabzada Farhan can do. He's the leading run getter of this tournament. He's got 100 also. Swing, swing, appeal, huge appeal. Yes, he's given him. He thought a lot about it and finally raised his finger up. And that is a good comeback by Sohail Khan. That is an excellent delivery. Really surprised him with that big loopy in swinger. Look at that. It swung a long way.
and it was hitting Sabzada Farhan. Zamir Haider thought long and hard. Sohail Khan never gave up with the appeal, and in the end, he got rewarded. Disappointed he is. 4 runs he scored. It's 4 for 1 KP. What a start to this grand finale. Khyber Pakhtunkhwa winning the toss, batting first. Has lost the biggest wicket, Sahibzada Farhan, and in comes Kamran Ghulam. He's another experienced man in this KP lineup. Sahibzada Farhan was one. He's been taken care of by Sohail Khan, so the responsibility now lies on the shoulder of Kamran Ghulam. 932 runs, 122 the strike rate. That average is good. Also got 100 as well. Slip in. Sohail Khan has developed that in-swinger with the new ball. Really caught Sahibzada Farhan on. Great start from the great fast bowler, Sohail Khan. This is what is expected. Oh, beautiful delivery. KP batters have no idea. And let's have a look at that LBW appeal. It swung in from that angle. Oh, can't say much. A huge in-swinger. 10 out of 10 to Sohail Khan for the appeal. He was persistent. He kept asking the question. In the end, Zamir Haider said yes. That's his favorite word. 4 for 1. Punched. So important in these big games to get that early start, a good start. And on this occasion, Sindh has got that. Zamir Haider, his 87th T20 game. A very experienced umpire. And his last one too. His partner, Shozab Raza. Another very experienced umpire. 156th T20 game. Walid Yaqub on your left, the third umpire. So what would be the plan from KP now, Shah Faisal? As they've lost their biggest player, biggest batter, they will have to sort out that plan B now. Well, I think they got an able replacement in Kamran Ghulam. He can play exactly the same role as they would have expected Sahibzada Farhan to play. So Kamran Ghulam's responsibility has doubled now, but he's very capable to do whatever Sahibzada Farhan would have done. That's good news for KP. Nicely driven, beautifully done, through the gap. A boundary to start off his inning, Kamran Ghulam. That's the price you pay for bowling those aggressive lengths. Sohail Khan looking to get that ball to swing, pitching it up. This time Kamran Ghulam really lent in neatly into the stroke. Weight coming into the shot. Just a caress. Great start to the final. 8 for 1. Mir Hamza, 30 years of age, 49 wickets, best of 4 for 9. We saw some swing from Sohail Khan, and if he gets that swing going, if he gets that in-swing going, it will be very difficult for the batters, Rehan Afridi, to face. Right from the middle of the bat. They run well, chance, oh!
direct throw might have made things interesting. It went really square of the wicket. Just the one stump to aim at. Little bit of movement, but found the middle of the bat. Umar bin Yusuf is very quick. Kamran Ghulam is equally quick. It is such a huge occasion for Sindh side, qualifying for the final for the first time. They wouldn't want to miss out on this opportunity, Shah Faisal. They must win it. And the young captain, Saud Shakil. The moment I saw this side, I thought that they had something about them. The energy was different from the first game, remember. New captain, new look, youngsters, and they have delivered. They have, and their run to the final hasn't been plain sailing. They were tested at different times. Their character was tested. They kept looking for their best 11. They rotated the side, and you have to say that they found the right combination at the right time. But excellent, refreshing approach to their cricket, the way they played this year. That is a credit to Sindh team. Yeah, almost. They had, what, 3 or 4 last over finishes. Some going their way, some not. And even the semi-final was an excellent game. Mir Hamza. Oh, beautiful. That is excellent. Kamran Ghulam in his full flow. That is smart cricket. That is a cracking stroke. Kamran Ghulam really lent into it with a bit of a flourish as well. Held the pose. Looking for some swing, Mir Hamza. And when you're looking for swing, you might go wrong. And again, going away with the angle. This is what Sarfraz is saying. And I'm glad that he's speaking. He's active. If you're talking about Sindh's progress in this tournament, a lot of credit has to be given to the senior players as well, including Sarfraz. Sharjeel has performed well. Sohail Khan, Mir Hamza, they're the senior campaigners. They really took the youngsters in their wings, and that meant that they had a very, very good team spirit. Wait is the call. We saw some positive intent from KP side from the last 2 games, especially that running between the wickets. Rehan Afridi and Sabzada Farhan ran really well. That is same as expected, and that was how the boundary was scored. Beautiful. Look at the timing and the placement also. Magnificent. Flourish, because he gave it a real thump. Wasn't one of those check drives. He went with the full flourish. Off the back foot. Excellent shot. In the air for a bit, but away from the fielder. Kamran Ghulam is on a roll. It's a little bit of movement, but early signs that that ball is coming onto the bat beautifully. First off the front foot and now off the back foot. This is gorgeous stroke play from Kamran Ghulam. In it, something in it for the bowlers, but batters are enjoying the bounce as well. Makes for a fantastic game of cricket. Remember, KP has added an extra fast bowler. Nicely pulled. That is excellent. Wonderful start by Kamran Ghulam. He's dealing in boundaries. More evidence of that good bounce. Horizontal bat strokes can be played on this pitch. Mir Hamza looking to pitch the ball up in the first half of the over, second half of the over. Pitched it short and was punished by Kamran Ghulam. Good roll of the wrist. And that is a great finish to the over. 2 gone, 21 for 1, KP. Sohail Khan is the one who's got the wicket. But what a reply from these KP batters. They've just attacked back to this Sindh side, and that is the right way to go. In a big final, you don't need to let the pressure get onto you. Down the track. Not quite going where he intended, Rehan Afridi, but intentions are pretty clear that they're not holding back.
Rehan Afridi has been very proactive. And ever since he's come into the KP side, the top of the order has looked more effective. Look at some of his strokes against Northern. He really took the bowling on. Four-pronged pace attack. He really went hard in the power play and then really took control of the innings. Boundaries all over the pitch. Good all-round range for Rehan Afridi. Nice. Squared him up. Sohail Khan has something about him, especially his relationship with the finals. We'll talk about it more. Straight to one. Yeah, so there's an interesting fact about Sohail Khan, that he has played 4 finals T20 cricket all through his life, and he has taken 1 fifer, and other than that he has not taken a wicket. So that means three times he's gone wicketless, and once he's taken a fifer. So that means he deals in big wickets, in fifers, in the finals. Oh, appeal. This is looking close. Yes, he's given him out. Excellent start by Sohail Khan. This looked out as soon as he hit the pads. Did he move too far across? Once again, Sohail Khan, wicket to wicket. Kamran Ghulam. Well, Zamir Haider once again been called into action, and he's given marching orders to Kamran Ghulam, who is looking very, very good. Gone for 16, 22 for 2. Adil Amin, the new man in. We're talking about Sohail Khan in the big finals. Either a fifer or nothing. Well, today's got 2 already. That's bad news for KP. What a start from Sindh side, I would say, because they've got their 2 main man back. That is Sabzada Farhan and Kamran Ghulam. It's up to these 2, especially Adil Amin. He's the senior member. He's got those numbers behind him. The average of 25, 150, strike rate 113, the best of 53. He has to deliver. He has to stand up now as his senior partners have gone back. Big inning is needed. Sohail Khan is teaming in. Oh, nicely done. That is top quality by Sohail Khan. 2 wickets for Sohail Khan, 2 leg befores. This one, Kamran Ghulam did fall over a little bit. Zamir Haider once again, he took his time, and Sohail Khan once again knew the result will be in his favor, because he bowls wicket to wicket. Not much movement on that one. Tension already. We can tell, we can say. Good run. They will have to quickly shift to plan B, because it has not worked. The main batters, the ace batters have gone back. It's up to these 2. You cannot keep on playing those big shots. You got to respect the bowlers too. You make a good point, because those 2 experienced men in Khyber Pakhtunkhwa's lineup, they're gone now. Most wickets in National T20 Cup since 2019. Zahid Mahmood with 45 wickets. The top of the pile, Sohail Khan hard on his heels, 41. Ahmad Bhatt, Wahab Riaz, Sohail Tanveer, some very good names in that list. Big boys in that list. Good over. 3 runs and a wicket. After 3, it's 24 for 2, KP.
What a fantastic tournament this has been, in terms of cricket, in terms of crowd also. We saw a good crowd in Rawalpindi. Multan has been brilliant. People has come in numbers, and they have equally been entertained by some quality cricket. Saud Shakil, a proud young captain. They put them on the back foot. Sindh side is on top at the moment. Yeah. Plan B for Mir Hamza as well, because like I said, he was looking to pitch the ball up initially to get that movement. Now he's pulled his length back. With KP under pressure, it's chance for him to build some pressure. I don't care about the match. I want to see him smiling. Sarfraz Ahmed. He's such a big player. Such an entertainer he is. Big one, up and over. One bounce, two bounces, and over the ropes. Rehan Afridi counter-attacking. Not quite off the middle of the bat. Rehan covered for the angle, just moved slightly across his stumps. And then bit of a slog. Got enough bat on it, couple of bounces. They're putting Mir Hamza under pressure and not letting him settle. Interesting to see what approach Rehan Afridi continues with, because 2 wickets have fallen down, 2 experienced men. Will he go in the same vein, or he just held back a little bit? He's not holding back, that's for sure. Mir Hamza didn't have a good day yesterday, and it's not a good start to the final also. Once he doesn't get the swing going, with this pace he gets very predictable, very easy to negotiate. That is why we saw the last delivery what Rehan Afridi played. He covered the line, shuffled him, and played it easily over that long on. So he has to make a comeback, Mir Hamza. Change in pace. Nicely negotiated by Rehan Afridi. Adil Amin, it's a regular for KP, hasn't had a very good tournament. Some really soft dismissals lately. This is the big stage. He needs to come good for his side, because he's quite experienced. After Sabzada Farhan and Kamran Ghulam, he's another experienced man. And both these batters are back in the hut. So Adil Amin's responsibility is really to give a platform to the lower order batters. Continue to bat for a while. That's nice. Good comeback. And also, he needs to find a way, because he normally doesn't come that early. So there must be a lot going through his head. But like I said, KP need him today. Rehan is batting in his usual vein. That is good news. It's 5 runs off the over. Saud Shakil has been brilliant. The team must be proud of him. The way he has operated is beautiful. Good end to the over. 4 gone, 29 for 2. केपी की 2 बड़ी विकेटों पर सुहेल खान ने हाथ साफ कर लिया है शुरू में ही, इसलिए उनके साथ बॉलिंग जारी रखने का फैसला किया है कप्तान सऊद ने। और ये अच्छी चाल है कि आप इंतज़ार ना करें 18वें 20वें ओवर का। हालांकि ये गेंद को रिवर्स स्विंग करा सकते हैं आगे चलकर सुहेल खान, और लगे हाथों
यहाँ पर इनका मजीद फ़ायदा उठा लिया जाए। पिछले दोनों टूर्नामेंट्स में अपनी धाक बिठाई थी खैबर पख्तूनख्वा ने। पहले रावलपिंडी में उन्होंने सदर्न पंजाब को शिकस्त दी और फिर लाहौर का फाइनल सेंट्रल पंजाब के खिलाफ जीता था अक्टूबर 2021 में। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन उतना ही अच्छा जवाब भी मिड ऑफ की जानिब से सऊद शकील, जिनके लिए इससे अच्छी इब्तिदा हो नहीं सकती थी इस फाइनल मैच ही। अच्छा लग रहा है विकेटें गिरने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो बैट्समैन हैं वो जवाबी वार करना चाह रहे हैं मरीना, और करना भी यही चाहिए। बैटिंग इनके पास मौजूद है। रहान अफरीदी बहुत अच्छी इनिंग्स कल इन्होंने खेली थी, 50 रन किए थे। आदिल अमीन ये भी बहुत स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन बड़ा फाइनल है, ज़ाहिर है आपको एक अच्छा टोटल पोस्ट करना है। भूल जाएं जो पहले हुआ। अच्छा स्विंग मिल रहा है सोहेल खान को और इसीलिए उनसे जारी रखने का फैसला किया सऊद शकील ने। एक अगर विकेट यहाँ पे और गिर जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत प्रेशर में आ जाएगा। शॉट लेकिन रन एक ही मिलेगा। वहां पर फंबलिंग हुई आसिफ महमूद से, जल्दी वो संभल गए। ये बड़ा फाइनल है। सिंध की टीम जो है तवील अरसे के बाद उसने फाइनल में कदम रखा है, इसलिए जो नए खिलाड़ी हैं उनको अपने जज्बात पर, अपने असाब पर काबू रखना होगा। यही बावर कराने की कोशिश की सरफराज अहमद ने। बार बार यही याद दहानी करा रहे हैं उन्हें। फाइनल है, जाहिर है प्रेशर होता है। यंगस्टर्स जितने भी हैं उनके लिए आसान नहीं है। यहाँ पे फाइनल का एक अलग प्रेशर है। ये वैसे बाउंड्री ऑप्शन मिल गई थी इन्हें, लेकिन बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किल रही है उनकी बैटिंग, खास तौर पर जब उनकी जल्दी विकेटें गिर जाती रही हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने अक्सर देखा है कि शुरू में जब इनके ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो इनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो दीवार से लगी रही। इनके बॉलर्स इनको यहाँ तक लेकर आए। ये जो फाइनल का रास्ता था इनकी फास्ट बॉलिंग की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा ने तय किया। आज ये खुद बैटिंग करना चाह रहे थे। अनवर अली ये कल के हीरो कुछ देर के बाद ये बॉलिंग एक्शन में होंगे। मुमकिन है कि छठा ओवर करें मीडिया सेंटर एंड से। सोहेल खान के लिए ये यादगार टूर्नामेंट है। पहले बार चले आए थे, लेंथ को कम किया, रफ्तार को बढ़ाया सोहेल खान ने। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं सोहेल खान, और किसी की कप्तान के लिए ये एक यूटिलिटी प्लेयर है। नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ ब्रेक थ्रू ज़रूर दिलवाते हैं, रिवर्स स्विंग भी करना जानते हैं, और ये इस टूर्नामेंट में नज़र आए हमें। मुश्किल कंडीशंस में इन्होंने विकेट्स जो हैं वो अपनी टीम को दिलवाई हैं। सोहेल खान ने सबसे ज़्यादा शिकार किए इस टूर्नामेंट में। फास्ट बॉलर्स में ये पेश रहे हैं। स्पिनर्स में जाहिद महमूद ने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, वो भी चैंपियन बॉलर हैं। कुछ देर के बाद गेंद उनके हाथ में होगी। स्कोर कट करने के लिए गए, लेट हो गए, बाउंस देखने में आया। एक और बड़ा उम्दा ओवर खान का, 33 पर 2। खैबर पख्तूनख्वा बहुत इनसार करते हैं अपने टॉप ऑर्डर पे, स्पेशली साहिबजादा फरहान पे। जब भी उन्होंने रन्स किए हैं उन्होंने एक अच्छा टोटल पोस्ट किया और मैच जीते। रेहान अफरीदी ने जब से ज्वाइन किया है उनकी कंट्रीब्यूशन अच्छी रही है, लेकिन आज दोनों नहीं बल्कि रेहान तो भी मौजूद हैं। साहिबजादा का बहुत बड़ा झटका लगा। अब ये मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर ज़रूर आया है। टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी परेशानी नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के हट में।
बॉलिंग में तब्दीली के मुतालिक सोचा जा रहा है कि अनवर या आसिफ महमूद में से कौन सी चाल चली जाए। आमतौर पर अनवर जो हैं ये पावर प्ले में एक ओवर करते रहे, लेकिन आज आसिफ महमूद को जिम्मेदारी सौंपी है। विन स्विंग कर सकते हैं, नए ऑलराउंडर हैं, हैदराबाद के बासी हैं और इन्होंने वो जमूद तोड़ा। दरअसल क्योंकि अभी जो हालिया तारीख है इसमें कभी भी हमने खैबर पख्तूनख्वा को सिंध के हाथों हारते हुए नहीं देखा था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने मुल्तान में मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई और ये इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। कल पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज़ शुरू हो रही है। रोशनियों के शहर कराची में बाबर आजम पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। जॉर्ज बटलर भी इंग्लैंड के नामजद कप्तान हैं। हाँ, शानदार मॉडल कवर ड्राइव, आदिल अमीन ने हाथों का लाजवाब इस्तेमाल किया। आदिल अमीन जो है वो बहुत ही टेक्निकल साउंड बैटर हैं और आसिफ महमूद की पहली गेंद थी, एक तरह से फ्लोटर थी, लेंथ अच्छी थी, लेकिन जो बाय विड्थ दे दी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। सिर्फ हाथों ने काम कर दिखाया कि ज़्यादा फुट मूवमेंट नज़र नहीं आई, लेकिन लाजवाब शॉट थी। ये शॉट इस बात की गवाही था कि ये पिच बैटिंग करने के लिए कितनी सहल और साजगार है। आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। इसलिए आज भी यहाँ बड़ा स्कोर बनने की तवक्को है। कल 180 रन का हदफ हासिल किया सिंध की टीम ने सेमीफाइनल में। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो T20 सीरीज़ है इसके कुछ टिकट्स जो हैं दस्तयाब हैं आइंदा आने वाले मैचेस के। आप pcb.bookme.pk विजिट कीजिए और अपना टिकट बुक कर लीजिए जल्द अज जल्द। और उठाकर खेला और पिट कर रह गए। आदिल अमीन चार्ज करने के लिए गए, लेकिन ज्यादा बुलंदी नहीं मिल सकी और ना ही फासला। कामयाबी ने कदम चूमे आसिफ महमूद के और सिंध के। आदिल अमीन अटैक करना चाह रहे थे आसिफ महमूद को, बहुत ज़्यादा पेस नहीं थी और अच्छा बल्ले पे गेंद आ रहा था। पहले भी चौका हासिल किया, इस बार हल्का सा चार्ज किया, लेकिन लेंथ थोड़ी सी खिंची हुई थी, ज़्यादा एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए और चिप करने चले गए। फिर पूरी शॉट खेलते तो इनफील्ड क्लियर होती, लेकिन आसिफ महमूद ने कामयाबी दिलाई है, तीसरी कामयाबी सिंध के लिए। और ये इसी तरह यूटिलिटी प्लेयर है आदिल अमीन, 7 रन बना के वापस 37 पे 3 की। आमिर अजमत, ये भी एक बहुत स्टाइलिश बैटर हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं, टेक्निक भी इनकी अच्छी है, लंबे कद के मालिक हैं। इनका आज मिडिल में रहना बहुत ज़रूरी होगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उसके बाद खालिद उस्मान आने वाले बैटर रह जाएंगे, उसके बाद इनकी टेल शुरू हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सीनियर्स का बहुत इनपुट रहा है। अनवर अली को हम हमेशा यंगस्टर्स के आसपास देखते हैं, आसिफ के साथ हर गेंद से पहले उन्होंने डिस्कशन किए। सिंध के पेसर्स ने अपना असर और रसूख बढ़ाया है। एक अच्छा कवर ड्राइव कर चुके थे अपनी जगह पर और इस बार बॉलर को हिरासा करने की कोशिश की। सऊ शकील आड़े आए, अच्छा कैच लिया सिंध के कप्तान ने और इस तरह 3 विकेटें अब खैबर पख्तूनख्वा ने गंवा दी है और बड़े फाइनल्स का दबाव महसूस कर रहे हैं। उस हिद्दत को इनके टॉप ऑर्डर ने। पहली विकेट आज सिर्फ 4 रन पर गिरी। साहबजादा फरहान ने अच्छा आगाज किया था, चौका लगाकर सोहेल खान की इन डिपर पर आउट करार दिए गए। किसी भी दूसरे दिन इनको नॉट आउट दिया जा सकता था। एक और विकेट सोहेल खान को मिली। पावर प्ले का
ये अच्छा इख्तिताम भी नहीं कर सके। आदिल अमीन ये मिडिल ऑर्डर में इनके सबसे माने हुए बैट्समैन थे, वो भी चलते बने। सुहेल खान ने नए गेंद पे अपनी महारत और एक्सपीरियंस दिखाया, 2 विकेटें हासिल की, अच्छा स्विंग मिल रहा था, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों देखने में नजर आया, जिसकी वजह से केपी के बैटर्स ने स्ट्रगल किया और अब आसिफ महमूद उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ऑफ साइड में 4 फील्डर इस वक्त 30 गज के दायरे में, ऑन साइड में 3 एंड किया। आसिफ महमूद यहाँ एग्रेशन दिखा रहे हैं। आमिर अजमत को आमिर अजमत जो हैं ये डेरा इस्माइल खान से इनका ताल्लुक है और ये पहले फास्ट बॉलिंग किया करते थे, फिर ओपनिंग करने लगे और इन दिनों इनको मिडिल ऑर्डर में आजमाया जा रहा है। एक हिटर के तौर पर सरवर आफरीदी के साथ अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट की दोनों जानिब शॉट खेलने की अहलियत रखते हैं। रेहान आफरीदी जो हैं ये ज़्यादा पावर प्ले में दिखाते हैं अपना खेल, लेकिन आज रंग जमा नहीं सके। एक तो दूसरे एंड पर विकेटें गिर रही हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी इनको अभी तक मिला नहीं है। प्रेशर इन पे बहुत ज़्यादा अब होगा क्योंकि स्कोर भी करना है, विकेटें भी बचानी है। ये इस कशमकश में एट टाइम स्ट्रगल करते नज़र आए हैं, लेकिन सिंध ने बॉलिंग अच्छी की, दूसरे एंड पे प्रेशर बनाए रखा। 10 रन ही बना पाए हैं 12 गेंदों पे, वरना इनका जो नेचर है वो अटैक करने का है। शानदार शॉट खेला और गेंद बाला बाला गई साउथ से और लॉन्ग ऑफ से हमला बोल दिया आसिफ महमूद पर। रेहान आफरीदी ने, जिनको आप बहुत ज्यादा देर के लिए खामोश नहीं रख सकते, उनने इस फाइनल का पहला छक्का लगाया। ये जिस तरह की सरफेस है यहाँ पे अगर आप आगे गेंद करेंगे या बहुत पीछे तो उस पर रन पड़ेंगे। ये बिल्कुल उनके जोन में था, ये ढूंढते हैं कि किसी बॉल पे बाउंड्री हासिल की जाए। बहुत ही कमाल शॉट थी ये, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से। 44 पे 3 6 ओवरों के बाद केपी। पावर प्ले में खैबर पख्तूनख्वा का आज बहुत बुरा हाल रहा है। इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार उन्होंने 3 विकेटें गंवाई इस मरहले में। जाहिद महमूद जिन्होंने कल पावर प्ले की नाकामी की तलाफी की थी सिंध के लिए 4 विकेटें लेकर, आज उनके पास सुनहरी मौका है और ज़्यादा दबाव डालने का और ज़्यादा जारहाना लेग स्पिन बॉलिंग करने का। बहुत अच्छी बॉलिंग की थी कल। सिंध के पेसर्स स्ट्रगल कर रहे थे, रन्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे और इन्होंने आते ही ब्रेक थ्रू दिलवाया था सिंध को। 4 विकेटें, तकरीबन 5वीं विकेट भी हासिल कर गए थे। इनका अब अहम किरदार रहेगा और बहुत अच्छा मिक्सअप करते हैं, अपनी पेस को भी वेरी करते हैं। आराम से, शाबाश 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 शाबाश। रेहान आफरीदी ज़्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और क्योंकि चले गए थे मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने के लिए कराची। और अच्छा कट शॉट, गेंद सीटी बजाती हुई गई पॉइंट के सामने से। पिछले ओवर में छक्का लगाया और अब ये दिलकश चौका रेहान आफरीदी ने। ये अच्छी फील्डिंग नहीं है, टाइम यूजुअली बहुत अच्छे फील्डर हैं लेकिन ये बहुत लेट हो गए थे, डाइव टाइम पे कर नहीं पाए। और ये अच्छा शॉट था, बहुत बाहर गेंद कर दिया था, अच्छा बाउंस मिला। जब लेग स्पिनर लगा हो तो ये पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट, थर्ड मैन, इन फील्डर्स को तैयार रहना चाहिए कि गेंद लाजमी आएगा इनके पास। यहाँ खास तौर पर जाहिद महमूद जो हैं ये हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में ज़्यादातर विकेटें अपनी लेग स्पिन बॉलिंग पर हासिल कर रहे हैं। उससे पहले गुगलीज जो हैं वो बहुतात होती थी, उनकी बॉलिंग में ज़्यादा गुगलीज का इस्तेमाल करते थे। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। रेहान अफरीदी जो हैं इनको
बुलाया गया इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए। इस नए विकेट कीपर को भी लाया जा सकता था, लेकिन शायद जो कहते हैं कि प्यास लगने पर कुआं खोदना जो है वो मुनासिब नहीं होता, इससे रेहान को वापस आया गया और ये कारगर रही हिकमत अमली केपी की। 49 पर 3। ये देखिए पावर प्ले का आगाज चौके से हुआ और फिर जल्दी विकेट गिर गई। इनफॉर्म साहबजादा की बाउंड्रीज आसानी के साथ मिल रही थी क्योंकि कामरान अच्छे टच में लग रहे थे। अल्टरनेटिव आउट दिए जाने से पहले बहुत ज्यादा एक्शन हमने देखा है। इख्तिताम इस पावर प्ले का छक्के पर हुआ, इब्तिदा चौके पर हुई थी और विकेट पे। क्विटिंग जो विकेट है वो बैटिंग के लिए तो साजगार है, लेकिन बॉलर्स के लिए आजमाइश भी है। अच्छी बॉलिंग की है अनवर अली को, अब मीडिया एंड से बॉलिंग करने का फैसला किया सऊद शकील ने। इनका भी बहुत अहम किरदार रहेगा। अच्छा स्टार्ट मिल गया, 3 विकेटें गिरी हुई हैं, कंटेन करने होंगे रन। 50 रन खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल कर लिए, जिसके लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलना पड़े हैं क्योंकि उनके 3 बैट्समैनों को बड़ी जल्दी नीचा दिखा दिया था सिंध के स्विंग बॉलर्स ने। और अब एक पार्टनरशिप दरकार है। अनवर अली को आज पावर प्ले में बॉलिंग ना कराने की मरीना ये भी वजह हो सकती है कि कल इनकी खासी पिटाई हो गई थी सेंट्रल पंजाब के बैट्समैनों के हाथों। एक ओवर में इन्होंने 21 रन दिए थे, हालांकि बाद में एक ओवर में खुद इन्होंने 24 बनाए, लेकिन शायद वो जो बॉलिंग का एतमाद था वो खो गया होगा। नहीं चाहते थे कप्तान इन पर मजीद दबाव आए, पावर प्ले में बॉलिंग करें ये। कप्तान को ये देखना ज़रूर होता है कि किस बॉलर का रिदम कैसा है और कहाँ पे ऑपोजिशन अटैक कर सकती है। अनवर अली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे बॉलिंग में, ज़्यादा पेस नहीं थी, स्विंग उस तरह नहीं मिल रहा था, इसलिए बेहतर यही था कि इनको पावर प्ले के बाद जब फील्ड खुल जाए तब दें और तब यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि अगर इन्हें पावर प्ले में लाया जाता तो ऑपोजिशन लाजमी इन पर अटैक करने जाती। इसलिए बेहतर यही समझा उन्होंने कि सुहेल खान जिन्हें स्विंग मिल रहा है उन्हें ज़्यादा ओवर दिए जाएँ। आसिफ की अच्छी लेंथ है, वो हार्ड हिट करते हैं डेक को। जायद को आखिरी ओवर दिया। बाउंस मिला अनवर अली को। विकेट गिरने के बावजूद जो बाउंड्री काउंट है वो काफ़ी काबिल ज़िक्र है। ये 8वां ही ओवर है और 8 चौके और 1 छक्का खैबर पख्तूनख्वा ने लगा दिया है। बड़ा दिलचस्प फाइनल होना चाहिए। अगर यहाँ से ये 160 165 तक भी पहुँच गए तो इनके पास बॉलिंग ऐसी है जो किसी भी टीम को नीचा दिखा सकती। मुझे हैरत हुई मास खान को आज इन्होंने ना खिलाने का फैसला किया। 4 पेसर्स के साथ गए। हमने देखा भी है कि इस विकेट पे पेसर्स थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए हैं। आपको रन रेट स्लो करने के लिए स्पिनर्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली विकेट टेकिंग ऑप्शन। आसानी के साथ 1 रन आमिर ने हासिल किया। मास खान ज़रूर विकेटें ले रहे थे, लेकिन क्योंकि सिंध की टीम में जो है काफ़ी ज़्यादा बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, शायद उसी गरज से जो है इन्होंने एक इजाफी फास्ट बॉलर को खिलाने का फैसला किया, क्योंकि वही कुव्वत रही है खैबर पख्तूनख्वा की। उनके फास्ट बॉलर्स काफ़ी लंबे कद के हैं और डेक को हार्ड हिट करते हैं, विकेटें लेते रहें। लेकिन लेफ्ट जो आपका लेग स्पिनर होता है ना, वो ट्रम्प कार्ड होता है। वो अब T20 फॉर्मेट में ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। अगर वो अच्छे रिदम में है तो आपको विकेट ज़रूर देता है, चाहे रन दें, और यहाँ पे विकेट ज़रूरी है। अरे सोचा था हुक करने के मुतालिक ये शॉट खेलते हैं रेहान, लेकिन फिर देखा कि गेंद पहुंच से बाहर है। शोज़ेब मुत्तला कर रहे हैं कि 1 से ज़्यादा बाउंसर आप नहीं कर सकते 1 ओवर में। एक चीज़ मुझे जो थोड़ा लग रहा है कि उसमें केपी ने मिस किया ट्रिक। अब्बास अफरीदी, इमरान जूनियर, सरवर, ये तकरीबन इमरान जूनियर बेहतर हैं, लेकिन सरवर और अब्बास अफरीदी तकरीबन एक तरह के बॉलर्स हैं। खैर अब कोशिश उनकी यही होगी कि जो भी रिसोर्सेज आज प्लेइंग 11 में उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज करें।
अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये लेग कटर था। ये किंगडम वैली नेशनल T20 कप जिसका फाइनल खेला जा रहा है। जीतने वाली टीम को 5 मिलियन रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर्स अप को 2.5 मिलियन इनाम का हकदार ठहराया जाएगा। इसके अलावा बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बॉलर, विकेट कीपर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द फाइनल के अवार्ड्स उसके अलावा हैं। साइम अयूब बड़े उम्मीदवारों में से हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की जहां तक बात है। ये पहले सोचा था लेग साइड में स्विंग किया जाए बल्ले को, लेकिन इस शॉट को चेक किया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। रेहान अफरीदी ने 54 पर 3। सही है जाए, शाबाश। 54, make it 55 for 3. The final, KP versus Sindh. What Sindh have done well is that they've seen the back of Kamran Ghulam and Saibzada Farhan, the prolific scorers for KP. So someone else will have to put his hand up in the final. Single was always on the cards. Don't bump into Sherjeel. Don't. The big lad. Saim Ayoub was fielding earlier. They brought their best fielder here at point, Umair bin Yusuf now. That is correct cricket, because you need your best fielder to be fielding at that point area, especially when leg spinner is bowling. Zahid Mahmood. Lovely bowling. Lucky. Wanted to go inside out over that extra cover. Could not quite time it. Sindh has been magnificent. They've come with a plan and they've executed it rightly. Their new ball bowlers, Sohail Khan swung it, and the follow-up bowlers, they've kept it tight within the line and length. Only one. What do you make of the decision of leaving out Maaz on this pitch in a big final, bringing in Imran Khan Senior? No. Good run there. That's what happens when the batters put pressure on the fielder inside the circle, the captain on this occasion. What I like about KP is they don't get into a shell. They've lost to informed batters, but they're getting on with the game. Got to take a chance somewhere with Zahid Mahmood also. Can't just have 4 overs with nothing. I think it has to be Amir Azmat. Zamir Adar checking, there was a direct throw, just making sure that there's nothing in the crease. Its decision is pending. Just made it. Amir Azmat survives. 60 for 3. Your favorite song in the background, Ali? And the banner also. I love Sarfaraz too. He's such a magnificent entertainer. He's the captain of Pakistan side. I love Rao Sohail. Never heard of him.
I think he's the guy who made the banner. I think so. He's happy today, and why not? Sindh is doing so well. They put KP on the back foot. 60 for 3, 9 overs. They're definitely in the commanding position. It's a good opportunity for somebody like Amir Azmat. He's rated really high in the camp. Here's another one for you. Thanks, PCB. I wish... I can't actually read it. Yeah, more cricket in Multan, I've just been told. Definitely. The crowd has been brilliant. I'm talking about Amir Azmat. He's rated really high. This is a good opportunity. He has to stand up for his team and deliver. You lose 2 or 3 early wickets. Yes, it has effects on your initial plans which you have at the toss. You got to have a plan B. You have to get 100 more at least. Bowling is good for KP, so I'm just talking from KP's point of view at the moment because they are the ones who are feeling the pressure. Yeah, the problem with KP is that they have a long tail. After this, it's Khalid Usman and then the fast bowlers. So this partnership is going to be very important, the key partnership. Catch it was the call. Yeah, Khalid Usman and Server to follow, and then there are fast bowlers. But it's up to this man. I'm really looking forward to see Amir Azmat play a big inning. In the big final, it's the time to do it. Seems like a long time ago when the tournament started in Pindi. Double league system, everyone plays each other twice, 17 match days and 32 matches minus the final. They're loving it, you know, the big occasion. Start telling each other this is out of town, little on the outskirts of Multan, so they have to travel a bit. Shot well stopped by Mir Hamza, but nevertheless the shot was good. They've done well since side, not just with the bowling but the fielding also. This is another effort by Mir Hamza. Didn't have a good day yesterday, also today struggled with the new ball, didn't have that swing going. But this man, Asim Mahmood, he's just come up with an excellent all-round abilities in him. He showed with the bat, and we all know that certainly he's a very good fast bowler. One for the future for Sindh. Upish, but to the right of the fielder. Long on, 2 runs, always on. Yeah, one thing they've done well is that they put their best fielders on the hot spot. Umair bin Yusuf at long on. End of 10 overs, it's 67 for 3 KP.
Just love their energy. Wonderful. We got Joker in the house. Nicely played. Will go over. No, it doesn't. Saim Ayub catches that. They had to press that accelerator, losing one more in the process. Yeah, chose the long boundary. Amir Asmat. This was a good opportunity for him, but he has lost it. Going against the spin. It was hit all right, but that is a long boundary. And Saim Ayub, the pocket dynamite, making no mistake. He's disappointed, and rightly so. Inning was needed. 10. He could only manage. It's 67 for 4, KP. Mohammad Saibat Afridi, the new batter in. 67 for 4 on board. Got almost 10 overs in hand. And that strike rate, 148, tells you the story that what he is capable of. But he's up against the very informed, rhythmatic Zaid Mahmood. If I hit a boundary, that's the wicket. I hit a boundary on my first ball I face and then again I get out. My strike rate will be 400. That's what strike rates are, very misleading. But yes, I know you're calculating over a certain number of games. But still, if I score a boundary every time and I get out, still it will be a good strike rate. You're so hard to impress. No, 148 is good. That's what I just said. It's over a number of games. He's played a couple of good innings in this tournament, Saibat Afridi. He's got the potential in him. He can bowl with the new ball. He seems the ball. And that's how the wicket fell. Amir Asmat. Was it needed? Was it too early? Very good catch by Saim Ayub. See, the thing is, time and again we talk about a player's capability, but it's got to be more evident in execution. What you're capable of is from what you've done in the past, but today they need him. Sarwar, Rehan, they've got to put their hand up. Got to take the fight to the opposition. It's the final. It's the last day. Good shot. It's just not coming on nicely. Amir also in the previous game couldn't clear the boundary. 69 for 4. Yeah, I wanted to go over extra cover. Lucky that they didn't time it better. Otherwise it would have gone straight to Mir Hamza. 11 gone, 69 for 4. They love cricket, don't they? This Multan crowd. They're enjoying it. They're energetic, they're loud. They come in numbers, family, kids, people of age. It's beautiful to see. And Anwar Ali is back. Should be a boundary.
runs are needed and desperately needed by KP. Doesn't matter how good or ugly it looks. If it's going to the boundary, just take it. Yeah, it took them 26 deliveries to get this boundary. That was quite deliberate by Rehan Afridi. He's played well. Got a 50 in this tournament. He's playing a good knock here, 33 of 30. KP been such a dominant side in this, all that domestic tournaments, but we hardly see them under pressure. This is a pressure situation. And in this tournament, I have seen for the first time that they have felt pressure. National T20 motorbikes lucky draw powered by Kingdom Valley. And all you need to do is the ticket holders, you have a chance to get into a draw and win these bikes. Gave one yesterday, maybe won 2 of them today. Hurry up. Don't have much time. Halfway through the first inning of this game. So if you're around Multan Cricket Stadium, come to the stadium, you might win a bike. Coming back to that point that KP has been so dominant, this was a tournament that they did feel pressure. Their senior players not included in the side. Iftikhar has been their main player. Haris also going. Rizwan is also the part of him. But without them, they did feel the pressure, but they've still done well to reach the finals. That is the quality of this side. They're very gelled in together, play for each other, play to win. The ramp shot, 4 more. Second boundary in the over. 888th boundary. That was deliberate again. Got big on him. A very proactive, very fit cricketer he is. Those quick hands, all working for Rehan Afridi. South Shakil has been brilliant. Are we going to see the new winner? Sindh for the first time, qualifying for the finals. Are we going to see a new winner? Well, seems like it. But it's too early to say. But good to see a new team coming in. I've been seeing KP doing that time and again, played semi-final in the first edition of this new system, then finalists and winners in the next 2. Good to see Orange in the final. Slog, boundary earned. It's not a bad over for KP, 3rd boundary in the over. That's 15 off it. 84 for 4. Expensive over for Anwar Ali. Finishing with a boundary. Just losing that grip. Anwar Ali, it's 84 for 4. इसके बाद कप्तान खालिद उस्मान में अच्छी बैटिंग करने की अहलियत है। अब्बास अफरीदी ये भी ऑलराउंडर हैं और फिर 3 फास्ट बॉलर उनके अलावा रह जाएंगे। यहाँ दानिश अजीज जो हैं 6ठे बॉलर हैं।
थोड़ा सा गेंद जो है ये इनका रुक कर आया है और सिंध के जो स्पिनर्स हैं उनकी सोच यही है कि गेंद को बैट्समैन से दूर गिराया जाए, ज़्यादा रफ्तार ना दी जाए, क्योंकि दूर से शॉट खेलते हुए कई बार बैट्समैनों को दिक्कत महसूस हुई है। यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन इसका मौका हो नहीं सका। ये 12वें ओवर का इख्तिताम चौके से किया, अच्छी बेस नजर आई, सरवर आफरीदी इसे उठा खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट के इलाके में। पिछले मैच में वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आए थे सरवर आफरीदी, लेकिन जो कहते हैं ना हर पत्थर अपनी जगह पर ज्यादा भारी होता है, तो ये जो 6 नंबर की पोजीशन है दरअसल ये इनकी है और आज यहाँ इसको ये अपना सकते हैं। और भी शाह फैसल मेरे साथ हैं कॉम्बॉक्स में। सितारे को और केपी को इस वक्त जरूरत भी है, बहुत इनकी रेपुटेशन है और ये टूर्नामेंट उनका कुछ बुझा गया बैट से, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं सकता और मैनेजमेंट ने भी इन पर एतमाद किया, भरपूर एतमाद किया और उनको एक एश्योरिटी दी है कि टीम में उनकी जगह की। आज वो एतमाद वापस लौटाने का वक्त है। इस ओवर में दूसरा ओवर थ्रो आया है, ये थोड़ी सी सिंध की टीम शायद रिलैक्स कर रही है या ओवर एक्साइटेड हो गए हैं इस ओवर में। यहाँ जो दायरे के फील्डर हैं उनको जाहिर है और ज़्यादा फुर्तीला होना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं सिंध से, जहाँ तक 30 गज के अंदर फील्डिंग करने का ताल्लुक है। दानिश अजीज इस थ्रो से कतई तौर पर खुश नहीं थे, इस बार आसानी के साथ रोका उमर बिन यूसुफ ने। एक और ओवर जिसमें सिंध ने खामोश रखा रेहान और सरवर को 88 पर 4। आज तमाशाई बढ़ चढ़कर इस फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं और अभी स्टेडियम के बाहर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अंदर आना चाह रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सब बराबर दिलचस्पी ले रहे हैं इस फाइनल में। दो बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट की आमने सामने आई हैं और इन्हीं में से कई क्रिकेटर्स स्टार बनकर उभरेंगे। क्रिकेट सीजन का इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता था, जिस तरह का ये टूर्नामेंट हुआ है और जिस तरह का आज फाइनल पे यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में माहौल बना हुआ है। फुल हाउस तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, हलचल है और क्रिकेट का मयार भी जो है बहुत बेहतरीन नजर आया है। और शॉट आला, सरवर ने अपने दाएं हाथ की ताकत दिखाई, बड़ी उम्दा हिट थी और अब ये पर तोलने लगे हैं बड़ी इनिंग्स के लिए। सरवर आफरीदी साइम अयूब को लाए हैं, पिछले चंद मैचों में उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। सऊद शकील ने शॉर्ट बॉल था, लॉन्ग हॉप और सरवर ने इसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। साइम अयूब शुरू में ये मीडियम पेस बॉलिंग भी किया करते थे, लेकिन इन दिनों कभी कभार बॉलिंग करते हैं, लेग ब्रेक बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ अपनी जो मंजिली उंगली है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कैरम बॉल करते हैं, फ्रंट ऑफ द आर्म, सारी मिक्स बैग है। इस टूर्नामेंट में ज्यादा बॉलिंग उन्होंने की है माजी की बनिस्बत। ये जो टूर्नामेंट का दूसरा हाफ रहा है, यहाँ पे सिंध ने अपना कॉम्बिनेशन काफी फाइन ट्यून किया है। सर ऐसा भी हुआ है कि 5 ही बॉलर्स इस्तेमाल किए और उनसे ही पूरे 20 ओवर करवा लिए। सऊद और सरफराज ने अच्छी तालमेल दिखाई है। अच्छा रिवर्स स्वीप, लेकिन फील्ड को पार नहीं कर सके और ये खतरा मोल लिया। एक दरअसल एक नया पांसा फेंका सऊद शकील ने दोनों एंड्स पर। उन्होंने अपने जो कमजोर बॉलर हैं, अपने छठे और 7वें बॉलर का इस्तेमाल किया है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है।
अच्छा कर, आखिरी अच्छा कर। दोनों टीमों की हिकमत अमली देखें तो सिंध ने अभी तक 3 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन केपी की लाइनअप जो है एक पार्ट टाइम स्पिनर आदिल अमीन के अलावा वो मुकम्मल तौर पे पेस अटैक पे उन्होंने निसार किया हुआ। फास्ट बॉलर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीम में। आखिरी अच्छा कर। कल कासिम अकरम को हमने देखा था, उनने 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया और ऐसे में जो उनके सरकर्दा बॉलर्स थे उनके कुछ ओवर कराना भी भूल गए थे। ऐसा हो जाता है जब आपके पास ऑप्शन ज़रूरत से ज़्यादा हों। ड्राइव किया, जिम्मेदारी से खेल रहे हैं सरवर आफरीदी। उन्हें छक्के से ओवर शुरू किया, 1 रन पर इसका खात्मा किया 97 पर 4। देखिए 7 बॉलर्स जो हैं वो आजमाए गए। सोहेल खान का भी 1 ओवर बाकी है। आसिफ महमूद ये भी डेथ में बॉलिंग करने की अहलियत रखते हैं। मीर हमसा जो हैं ये कल महंगे रहे थे और ये भी देखना है कि इनको कितना इस्तेमाल कर सकेंगे। जाहिद महमूद इनके कलीद हैं, उनका 1 ओवर अभी बाकी है। हो सकता है कि वो रोका हुआ हो टेल एंडर्स के लिए, जिनको लेग स्पिनर खेलना आसान नहीं होता। माहौल जश्नी है आज मुल्तान का। जी बिल्कुल, और 2 रोज कबल जो बारिश हुई उसकी वजह से मौसम में भी फर्क आया है। बेहतर खुशगवार मौसम है। ये इंज़मामुल हक इनक्लोजर, यहाँ पे भी तमाशाइयों की अच्छी तादाद मौजूद है। फजल महमूद इनक्लोजर और इससे आगे इलाही बिरादरान से मंसूब इनक्लोजर है उनके नाम से, और वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन जीनों पर भी रौनक होने लगी है। बहाल हो गई है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की रौनकें। दरअसल आज की शाम इस अरसा में मीर हमजा की वापसी हुई है। और मुल्तान के लिए भी ये काफ़ी बड़ा सीज़न है। यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच भी होगा दिसंबर में, और PSL के मैचेस भी यहाँ पर होने हैं। जैसा मैंने कहा, क्रिकेट सीज़न का आगाज़ तो बहुत ही शानदार हुआ है। अच्छी पिचेस देखने को मिली, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, नौजवान खिलाड़ी। यार ये बड़ी आला सीरीज शुरू होने वाली है। दुनिया की 2 बेहतरीन T20 टीमों के दरमियान कल से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। हवा में खेला और हाथों में खेल गए। उम्दा रनिंग कैच लिया साइम अयूब, जिनको आप खेल से ज्यादा देर दूर नहीं रख सकते। उन्होंने ये चोट पहुंचाई खैबर पख्तूनख्वा को, और ये बड़ा धचका है। सच बैट्समैन रेहान गए। बहुत बड़ी विकेट है। मीर हमजा ने एंगल से बॉल दूर लेकर गए। रेहान ज्यादा सीधा खेलना चाहते थे, स्क्वायर चला गया। अच्छा जज किया साइम अयूब ने। कप्तान सऊद शकील का बॉलिंग की तब्दीली का फैसला भी कारगर साबित हुआ, और सिंध की टीम इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल में। अच्छा खेले रेहान आफरीदी, 45 रन बनाए। केपी 98 पर 5। खालिद उस्मान के लिए ये सूरत हाल नहीं है। अक्सर उनको देखा गया है बहरानों को टालते हुए। ये मैन ऑफ क्राइसिस हैं इस खैबर पख्तूनख्वा की टीम के, और अहम रन्स बनाना ये जानते हैं। ज़्यादा रन्स नहीं बनाते, लेकिन कीमती रन्स बनाते हैं अपनी टीम के लिए। इम्पैक्ट प्लेयर हैं। बात हुई टूर्नामेंट के शुरू में इनसे, टॉप विकेट टेकर्स या रन गेटर्स में केपी के प्लेयर्स का नाम ऊपर नहीं होता। वो कहते हैं ज्यादा इम्पैक्ट पर इनका ध्यान होता है। ऐसी कंट्रीब्यूशन जो मैच विनिंग हो, उसकी ज्यादा अहमियत समझी जाती है केपी के डगआउट में। गेंद मिल गई थी, लेकिन इसको
आखिर में ज्यादा स्क्वायर खेल गए, थोड़ा सा स्लाइस हो गई उनकी ख्वाहिश से ज्यादा। कमजोर टॉप हैंड हुआ जिसकी वजह से बॉल स्क्वायर गया। पूरा खेल जाते तो ज्यादा सीधा चला जाता साइम से दूर, लेकिन अच्छा जज किया साइम ने। फील्डिंग का मयार भी सेमीफाइनल्स के बाद आज फाइनल में भी काफी बेहतर नजर आया। मीर हमजा को वापस लाने का फैसला बड़ा कारगर रहा। विकेट हासिल करने के बाद सिंध की टीम ज्यादा तवाना हो गई है, क्योंकि दोनों एंड्स पर इससे पहले ये पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। विकेट लेना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सरवर आफरीदी और रेहान में ये सलाहियत थी कि ये स्कोर को 165-160 की तरफ ले जाते। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की टीम में ये सलाहियत है, खासतौर पर जब तक ये सरवर रहेंगे। रेहान आफरीदी के आउट होने का वक्त इसलिए भी गलत था, पहली मरतबा ऐसा लगा कि सरवर को रिदम मिला, पिछले ओवर में उन्होंने छक्का भी लगाया। यहाँ विकेट गिरने के बाद उन्हें दोबारा एक मरतबा फिर थोड़ा सा जो है वो कंसोलिडेशन की तरफ जाना पड़ेगा। 5 खिलाड़ी आउट हो गए। यहाँ जॉर्ज बटलर जैसी बैटिंग की जरूरत है खैबर पख्तूनख्वा को, जिनकी तस्वीर नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त किले के सामने। सिंध के फैंस आपकी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि अगर जॉर्ज बटलर जैसा खेल गए फिर तो क्या ही कहने। बटलर जो मॉडर्न डे के ग्रेट्स हैं उनमें उनका शुमार होता है। 100 रन भी मुकम्मल हुए 15 ओवर्स के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 100 पर 5। ज़्यादातर बैट्समैन जो हैं वो सेट होने के बाद आउट हुए। कामरान गुलाम 16 रन बनाए। आमिर अजमत भी अच्छे लग रहे थे, उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। और रेहान आफरीदी काफ़ी एतमाद से जिम्मेदारी के साथ इस इनिंग्स में पेशरफ्त कर रहे थे, लेकिन बड़े गलत मौके पर वो पवेलियन वापस गए। जो बैटिंग ऑर्डर आपने देखा, अब्बास आफरीदी ऊपर आ सकते हैं। दोनों टीमों के मद्दाह काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर। सिंध की टीम जो है ये अक्सर हारती रही है खैबर पख्तूनख्वा से पिछले कई बरसों से, लेकिन जो पिछला मैच था यहाँ पर, जो राउंड का मैच था इस टूर्नामेंट में, वो आसिफ महमूद ने अपनी ऑलराउंड कारकर्दगी से इनको जितवाया था। और उसके बाद एक यकीन आ गया इस टीम में कि वो खैबर पख्तूनख्वा का भी मुकाबला कर सकते हैं, उनको फाइनल भी हरा सकते हैं। इसलिए ये भी इस टीम की एक बड़ी कलीद रहे। आसिफ महमूद अब 2 ऑलराउंडर्स हो गए सिंध की इस टीम में, अनवर अली और आसिफ महमूद, जिसकी वजह से इनका तवाज़ुन ज़्यादा बेहतर लग रहा है दीगर टीमों से। जी बिल्कुल। और यहाँ पे दोबारा जिस तरह पहले बात कर रहे थे, सिंध की मैनेजमेंट को भी दाद देनी होगी कि टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपने सारे वसाइल का इस्तेमाल किया और रफ्ता रफ्ता जो टूर्नामेंट बढ़ता गया वो अपनी बेस्ट 11 को पाने में भी कामयाब हुए। जहाँ पे पहले मैचेस में कुछ इनका जो बैटिंग में फिनिशिंग का प्रॉब्लम आ रहा था आखिरी 5 ओवर्स में, उसके लिए इनके पास अब 3 बैटर्स मौजूद हैं। कोच गुलाम अली ने ये तब्दीलियाँ की। स्मैश किया और मैदान के बाहर थे मारा। बड़ी जोरदार हिट थी ये सरवर आफरीदी की, जो अब इस इनिंग्स को एक सही अंजाम की तरफ ले जाने के मूड में है। बिल्कुल यही वो सर्वर है जिनका आप जिक्र कर रहे थे। तो कटर लगा लेकिन पूरा वक्त मिला और सर्वर ने जोरदार स्ट्रोक खेला। बल्ले से बहुत ही अच्छी आवाज आई, की आंखों में चमक नजर आ रही है आज। यहाँ नॉर्दर्न के खिलाफ जब इन्होंने रावलपिंडी में बैटिंग की थी तो दिल जीत लिए थे
इनका स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 340 था उस इनिंग्स में। सरवर अफरीदी का 11 गेंदों में अगर मुझे याद पड़ता है तो इन्होंने 37 रन बना दिए थे। इसलिए ये बड़ा खतरा बन कर मुंडला रहे हैं। अभी भी एक ऐसे बैट्समैन है, अगर ये खेल गए इस इनिंग्स से आखिर तक तो फिर केपी की टीम रहेगी इस फाइनल में। उन्हें सपोर्ट चाहिए होगी। यहाँ खालिद उस्मान का किरदार भी अहम है। हमेशा ऐसे मौके पर खालिद भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर उनका और सरवर का साथ रहा। अगले चंद ओवर्स में केपी की इनिंग्स जो है वो अपना मोमेंटम दोबारा हासिल कर सकती है। इस बार रन आउट होने का खतरा था, लेकिन इस गेंद को गंवा बैठे शर्जील खान। गेंद सीधी उनकी तरफ आ रही थी, बिल्कुल हिलना नहीं पड़ा। शर्जील खान क्या ये तासुर दे रहे हैं कि ये उनके पांव के नेल हैं, देखिए स्टक हो गए थे, हालांकि ये गेंद रुकने वाली थी। इस आउटफील्ड पे, इस तरह की आउटफील्ड पे इस तरह की मिसफील्ड का कोई एक्सक्यूज नहीं। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, टिप करती हुई आई, गेंद को दूर गिराया आसिफ महमूद ने, रफ्तार भी कम की। अच्छा मुकाबला इस मरहले पर हो रहा है सरवर अफरीदी का सिंध के बॉलर से 110 पे 5। $110 for 5, 4 overs to go. Zayed Mahmood back in the attack with his final over. Just setting the field. Very vocal Sarfaraz, just suggesting what can be done to his captain, Saud Shakil. Highest wicket taker in National T20 Cup since 2019. On the top. Look at that good economy. Got 46 wickets in 33. Just out of the gloves that Sarfaraz is wearing, almost. Back for 2. He's been evolving, Zayed Mahmood, in white ball cricket. Early on, when you would see him, he would bowl very quickly, some decent pace. Now he's learned the art to control it. Crowds have come in big numbers. We're just getting into the commentary box, and there's a long queue outside. People trying to get in. They are late. They know the game starts 7:30. Almost the first innings is coming to an end. But they've come in numbers, yes. They have an opportunity to win a bike as well from Kingdom Valley. So save your tickets, ladies and gentlemen. The draw, your name might just pop up. He just realized in the flight he might miss the leg spinner, so just playing square of the wicket, and an easy 2. Problem for KP is that they have been losing those wickets in regular intervals. Runs, that wasn't a problem from ball 1, but the wickets, that's what's been setting them back a few steps.
Sarwan and Khalid. After them, it's a long list of fast bowlers to follow. Pushing hard for two, pushing hard, and That's well done. Sarfaraz is pretty upset with the way the fielders approach the ball. 17 gone, 118 for 5. Straight away they call for 2 runs. Balls in the vacant gap. The fielders in the deep, they need to judge the bat speed. It's sprint in. 17 gone, 118 for 5. How many more, Marina? 18 balls to go. Can they get to 150? 5 wickets in hand. They should look for it, definitely. It's just which bowler will they pick to go after. National T20 motorbikes lucky draw part by Kingdom Valley, and Mr. Ghulam Hussain Shahid, as we speak, is picking out a random winner. All the ticket holders, they have a chance to win, and that is the winner. I can't read, but he's the winner. Congratulations to you. We'll find him in this crowd and bring him on the camera. Was that your name? No, I'm not that lucky. I am not. Because I never buy tickets. I always look for complimentary. So yeah, it's not impossible. I'm just asking for 32 more runs in 18 balls. That should be 4. Hit hard, hit square. Captain wants the runs. It might be this over. Mir Hamza has been struggling. Hasn't got the right rhythm, right areas. He's pushing very hard to bowl. And just erring on this occasion. Ball kept going away, allowing that width to work. Raced away for the boundary. They might capitalize on this over. Change of bat for Khalid Usman. That was pretty good. He hit a boundary with that. This is the 6th bat. The one that throws the ball into the crowd. Got a 90-meter 6 written on it. There, in the air, safe. Oh, almost. Get another one. You need another one. That's not the bat with the 6 on it. They're up and running, making most of this over. Back-to-back boundaries, and Mir Hamza, you could hear him grunt every time. That's how much power he's trying to put in his bowling. The length, again, just allowing him to free his arms. He played it beautifully, waited for it. The fielder was there, but enough distance away from him. Where's he going to hit him now? 2 boundaries, 2 deliveries. Again, behind the square, straight to the fielder. Direct hit, no. They can come back for 2 now. Khalid Usman gets the strike again. You could be right, Marina. Is this the over they're targeting? 128 already, which means 10 more added in the over. 3 balls to go. He's coming around the wicket now and has to be very careful bowling at Khalid Usman because he loves to go down. Look at that. There's one there, but he very cleverly realized that it's hitting the stumps and no one's backing up. Fielder was in deep. Stay away from his pads. Oh, no. That's well done, but Khalid Usman is home. Suddenly, Sarwar sent his captain back. It was a wise call. Mir Hamza is very athletic. Quickly realized there might be a run-out chance. Still going up. I think he's safe.
Not out, he's safe. 2 more deliveries now. He's coming around the wicket. Khalid Usman, he hits big sixes down the ground. Can hit him from mid-wicket. It's just the length. Has to be immaculate. Mir Hamza, don't give him anything to get underneath or on a shorter side. 2 Yorkers, yes, he needs to nail that. Maybe slow one on a hard length within the stumps. Gone! Cross bat into the stumps, fuller one, and Mir Hamza claims the KP captain. Hard length it is. It wasn't a slow delivery, but that's what you want to bowl against Khalid Usman. So again, trying to go hard. They wanted to capitalize this over, but the last laugh belongs to Mir Hamza. No problems there. And it wasn't any problem at the other end as well for Mir Hamza. That's a big breakthrough. They were cruising now. Khyber Pakhtunkhwa, good wicket to get. Mir Hamza, he'll be relieved. He had to accelerate. 16 of 13. Khalid Usman, KP 128 for 6. New batter, Abbas Afridi. Is the bowlers now will start. No specialist spinner in the KP side today. So now the list goes down with the batters. Big hit, but it's not going to go a distance. He's going to keep strike, Abbas Afridi. 18 gone, 129 for 6. Khyber Pakhtunkhwa, they're struggling. Servers, the last hope. And that's how Khalid Usman, the captain, gone. Hard length, that's what I was talking about. He had to go into the leg side. The length couldn't really allow him to get underneath. It was a wild swing, never kept his eyes on. But within stumps, got more chances of success as a bowler. Abbas is on strike. Server is the last warrior if they want to reach a decent total. High in the air, keeper wants it. He's asked everyone to move away. And taken. He had to run almost to deep backward square leg. Just at the edge of the 30-yard marker. That's brilliant. Sohail Khan brought back into the attack. And he got the breakthrough. First ball wicket, flexing his bicep, and that's why. Wild swing, trying to clear that fence, never got good connection, and Sarfaraz Ahmed, the moment it went into the air, he started sprinting. Another one gone, Abbas Afridi on 1, KP 129 for 7. It's been a while since we've seen... Oh! Arshad Iqbal, hold the bat tight, you've got to use it. It's been a while since we've seen Sarwar
on strike. The previous over was faced by Khalid Usman and then some of them by Abbas. So now he's finally on strike. He's got 11 deliveries in this innings. He's got to use most of them. What a spell for Sohail Khan. 3 wickets, 15 runs. He's on fire. It's high again. Again, Sarfaraz pushes everyone back. Gone. 2 and 2. Same bowler, same keeper. That's why you want Sohail Khan in your bowling lineup. All experience coming into play in all important final. It looked like Sohail and Sarfaraz are the ones playing into the pitch. Sarwar wasn't expecting that. He crouched, wanted to launch it into the leg side, and rest was done by this man. Yep, 2 for 2. That combination is working. Sarwar, the big wicket, the last hope for KP gone. 30. KP 129 for 8. He's on a hat-trick. Sohail Khan, 4 wickets. Can he get a 5-er with that hat-trick? That'll be amazing for him and Sindh as well. All experience coming into play. Sohail Khan on a hat-trick. Arshad Iqbal on strike. Oh, run-out chance. They're down. At least they want to play the full 20 overs, 10 more deliveries. Let's have a look at 2 wickets. That's the first one. Abbas going hard. Again, it was the nagging length. Sarfaraz doing the glove work. Sarwar had to go big. He had no other option. They were falling behind. Another take from Sarfaraz. Loud call. And has been brilliant so far. Sohail Khan into the finals. What else can you expect of him? Really glad to see him cheering, smiling. That's what we want him. That's what we expect of him. Just a single. Good bowling. Back of the hand. That's why I got some extra bounce on it. They're closing things very tightly now, Sindh. 130 on board in the finals for the first time. And what a performance they've been delivering. This guy, he'll be happy. Young captain taking his team into the finals. Run out chance? No. I've heard that so many times from Sarfaraz, wanting his bowlers to bowl the last one with all concentration, because especially when the over is going so well, 2 wickets, dot 1-1, and look at his digits, 4 for 17. Sohail Khan, last ball of his quota, 4. That's brilliantly done. Lovely spell of fast bowling. 4 for 18, Sohail Khan. He was lethal with the new ball, setting batters up, outswingers, and then the in-swinging one came in, and they had no answer to LBW straight away. This one with the death bowling, new ball, he makes it talk, hitting those hard lengths, the cutters, back of the hand deliveries. It was a big wicket. That's why you want him in your bowling lineup. He's a pure package of fast bowling.
T20, it's been hard for the bowlers, but Sohail Khan is leading this list. 21 wickets in 10 matches. Have a look at that economy, 7.9, and average is 14.4, 1 4-wicket haul. Imran Jr. to follow. He'll have his go. Zaid, the other bowler from Sindh in this list. What an exceptional over. Full authority of Sohail Khan. With the last over, the idea will be to stay within the stumps. Hit that hard length. Imran Jr. and Arshad would be trying to extract something out of it. 133 so far, 5 deliveries to follow. Look at them. They're enjoying that live action in front of them. Multan has been superb. Going to test them. Just took off into the wicket. Lucky draws all over. People are coming in big numbers. And if you want to be one, just save your ticket. And there'll be a draw in which you have a chance of winning the Kingdom Valley motorbike. Mr. Ghulam Hussain Shahid will be picking out a random ticket which may have your name. Big shot. Can he clear the boundary? Yes, he can. Much needed 6 runs. They have to go after everything, every opportunity. Just squeeze those runs out. There's a half tracker from Asif. Scheming in, that angle helped him with that pull shot. He's deep into the crease, allowing his hands to open. And he made sure it travelled all the way. 6 important runs for KP. Asif will need to change his plans. Straight away we can see Anwar Ali walking to him. Middle stump, and not just out, it's broken. That's the length to bowl to a tail ender. Full into the stumps. You'll be rewarded just like this. 9 down. Redemption. You could see what it meant. Some pace on it, just tailing in. And breaking the middle stump. Yes, that's how it's done. Gave away nothing to Imran Jr. Have a look at that celebration. He wasn't happy with that 6, but it was his fault. Imran Jr. gone for 7. Khyber Pakhtunkhwa 139 for 9. Ahsanullah, the new batter in, 139 for 9. His bowling would be much needed today by KP in this final of the National T20. And if Sindh is to beat KP today, it'll be the second defeat for KP in the day. Second 11 beat. Sindh second 11 beat KP today by 44 runs. Hassan Mohsin scored, we got figures of 4 for 24. Well done, the second 11 Sindh. Straight shot, flat, just on the bounce. Oh, come on, what is going on? He's not even listening to his partner. That's suicide. All out with 1 ball to spare. Got to look at this again. He was not even listening to his partner. Arshad Iqbal screaming. I don't know what he was doing. He played it straight and realized it's going straight to Anwar Ali, just strolling around, and Arshad, look at that. He was yelling. You have to run for 2. You just have 2 more deliveries to face. This is poor. This is really poor.
All out, Khyber Pakhtunkhwa on 140. And this bunch will be really happy. Khyber Pakhtunkhwa opted to bat first. Couldn't really kept going. The momentum was never on their side. But you have to give credit to Sindh. They bowled well, they fielded well. Daud Shakil led them really well. Now it's up to their batters. It's the lowest score batting first in a final of the National T20 since the new system was introduced. Sindh have bowled well to keep KP at 140 all out in 19.5 overs. They couldn't bat the full 20 and they couldn't bat according to the plans they had, I'm sure. They won the toss and decided to bat first. Khyber Pakhtunkhwa decided to bat first. And the top order, that's what they heavily relied on. Saibzada Farhan gone on 4. Rehan Afridi, some resilience. He scored 43. 16 for Kamran Ghulam. 10 for Amir Azmat, 30 for Sarwar. That was important innings, but the rest couldn't really get going. Never reached according to their plans or scored runs on a decent surface. 4 for 18 in 4 overs. Sohail Khan, brilliant right from the word go. Got the big one. Saibzada Farhan and Kamran Ghulam. 2 for the leg spinner. Sorry, 2 for Mir Hamza, 2 for Asif, and 1 for the leg spinner. All contributed and did a brilliant job. Saibzada Farhan and Rehan Afridi, they had a huge task to put a good target. Swing straight away for Sohail Khan. It was dealt beautifully. But this one, yes, coming back into, he was very persistent and kept on asking the right questions, but did receive some pounding. A glorious cover drive through the gap. Rehan and Saibzada Farhan, they've always looked in control. It was pulled nicely. Whenever something loose was offered, they went for runs. This was a big breakthrough. Again, Sohail Khan, spot on. And that was the biggest dent. Rehan came in and he went really hard at the bowlers. Kept taking that scoreboard down the track. This was another wicket for Asif. It was his first one. Then they struggled to find momentum. Yes, the runs were coming, but the wickets, on the other hand, they were falling. This one was slammed hard, straight to the fielder, though. Good fielding by Saim. Cannot keep him out of the game. Some momentum again shifted towards KP. Runs kept on flowing. Yeah, they were coming, but every time they tried to use the long handle, they kept losing wickets. So you'll see a few big shots and then a wicket fall. So the momentum wasn't really gained as they would have liked. They'll always be looking for that partnership. And the way KP plays, they still keep themselves into the attack. And that's the way to go about. Probably that's the way they managed to get that 140. But yeah, this was one over where Usman really worked hard against Mir Hamza, got a few boundaries going. But after that, Sohail Khan came and got back-to-back wickets. And he got the important wicket of Sarwar, who could have probably finished on a high note. This was Sarwar's wicket. Both the catches were taken by Sarfaraz's safe gloves. And after being hit for a big 6, middle stump was taken out. And then this one, I don't know what was happening down there. The second run was always there. He's calling his partner, and Ahsanullah is maybe in a state of shock what has happened with the team. Well done, Sindh, in the final of the 2022 edition of the National T20. 141 to win for Sindh. We'll come back in a moment.
welcome back once again to the final of the National T20, Kingdom Valley National T20 at the Multan Cricket Stadium. Khyber Pakhtunkhwa versus Sindh. The batting from Khyber Pakhtunkhwa couldn't last for 20 overs. 19.5 is what they batted. 43 from Rehan, but of 41 deliveries. Down the order, Server got 30 of 20, helped them to get to 140. I'll tell you what, if they can get quick wickets in the power play, we might just have a match on our hands. But this is the lowest total batting first in the final since the new system. Sohail Khan, that man once again in the wickets. 4 for 18. He was very, very good. Mir Hamza took a couple of wickets in the middle phases of the innings. Really pegged KP back. Good team effort from the Sindh. All the bowlers chipping in. And 140 at the halfway stage. They will be the happiest side. People have been queuing outside to get in. There are lots of people there, especially in the lower part of the stands. It's full. Not Halloween yet. Long queues outside when the game started. Still pouring in. You look around the different entrances, you can see a stream of people still coming in. At 141, like Sikandar said, a couple of big wickets in the beginning, like Saim Ayub and Sharjeel. KPK would really be back in the game because those two have been prolific. What's the team talk in this huddle? These were the two men that I was referring to. Saim Ayub has had a sensational tournament. He's really caught the eye of many. His stylish stroke play, his sublime power hitting. Those two words don't go hand in hand normally. But this man, Saim Ayub, has shown that in this tournament. We all know what Sharjeel is capable of. And we all know what Khyber Pakhtunkhwa's fighting spirit is like. Plenty of cricket left to be played in this game. The man in form, the man who can get them off to a flyer. Saim Ayub. This time around, we've seen more of him than Sharjeel Khan. And he's a class act. His strike rate was pretty good, and often we've seen in this tournament, he's outscored Sharjeel. That's not a mean feat to achieve. That strike rate of 139 over a period of 144 games. Terrific stats these. 500. When he gets in, he can go big. KP's bowlers will have their job cut out. Arshad Iqbal, 54 wickets. He's had his moments in this championship. Does he have one big performance left in him for this big night? Shah Faisal, I'm telling you, if they can get Saim Ayub right now in the first or the second over, this match is going down to the wire. Because that's the way it goes. Saibzada Farhan was out. That send a jitters down the spine of KP. This man, Zamir Haider, the experienced man, calls for play, all in readiness. Here we go. Sharp rise there. And Sharjeel, we know, will chase it. Had he got any part of the bat onto it, that would have flew over third man. Though third man is deep, but still over him, I'm telling you. Absolutely. On the way up when Rehan took it. Feet off the ground. Hands above his head. That's the kind of bounce Arshad Iqbal is getting. Remember, KP's bowlers are taller and they hit the deck bowlers bang in.
And that will be the difference here, because you can really exploit the bounce in this pitch. Yeah, just angling that across the left-hander. You're playing with fire, Shad Iqbal. You're giving him width. The bounce and pace is not helping Sharjeel connect it, but once he does, be a problem. Keep it close to his body and you'll have a chance of him chopping it onto the stumps or getting a wicket somewhere around the mid-on region. Get excited with the pace and bounce, but if your lines are not spot on, you can really get punished as a bowler, especially against the likes of Sharjeel and Saim. Catch it, it was the call, just between that gully and that slip. It really flew, and for a moment it looked like it was going straight into the hands of that gully fielder. Did he need to be a little more finer because of the pace of Arshad Iqbal? Look at that, to his right. Well, too far away from him. But Arshad Iqbal excited. If he gets it in his zone, watch it fly through covers. Keeper, leg stumpish line, should be a leg by. Yes. So, 2 for no loss at the moment. They don't have a big total chase here. Over here, they chased the highest total in National T20 yesterday to get into the final, Sindh. The wickets are key here. This is again one that middle of the road total, where the teams sometimes don't need to go hard or just to take it in their stride. Now the field change, fielder from cover has been brought across to mid-wicket. That suggests that Arshad Iqbal wants to bowl a little straighter at Sharjeel. He was talking about the highest total in a semi-final chase ever in a National T20 last night by Sindh against Central Punjab, 180 to win. And they hit a 6 and got there. Sindh liked chasing. Talking to Ghulam Ali earlier, he said the team is set up to chase because of those 3 finishers, that he thinks they can do the job for them in any situation. That's Danish, Anwar and Asif. Anwar came good last night. Another leg by to end the over, 3 for no loss. This is certainly Sindh's best finish here, getting to the final. Couple of the occasions they reached the semi-final. On one of the occasions they were 5th in the inaugural tournament in 2019. Since then they've made it to the semi-finals, but this year for the very first time they are the finalists. Ahsanullah, he'll be bowling quick, he'll be bowling sharp deliveries, especially with that extra bounce that he gets. Let's see how Sharjeel deals with that. He's not worried about bounce and pace, he likes it, so it's a good contest here, we're expecting. Yeah, they've got that covered. Wide third man. In some of the previous games they had a fielder in gully for Ahsan because of the bounce he gets. Once again Sharjeel getting up on his tiptoes. Extra bounce is what Ahsanullah will get because of his height. Also the pace.
He'll test Saim Ayub as well. It's the regulation field on the offside, just the backward point. Could they do with a gully? Maybe. Ring of fielders on the onside, which means that he wants to bowl straighter at Saim as well. That's the line. And that is how close you want to be to the left-handers. Such kind of pace, the angles are very important for those infielders, especially behind square. This one just jagged back a little bit, cramped Saim for space. It went straight to that fielder at backward point. If the angles are not right, kind of pace and bounce there is, the ball will fly away very quickly. Winner and runner-up is what they're playing for. The National T20 trophy. Oh, there was a bit of a deflection, or was that just the ball moving in the air? Nobody moved, only I felt. Just the bobble after it passed Saim. Look at that. This is one of Saim's go-to shot. That wobble after the ball had passed Saim. Could be deceiving. That happens in England a lot. Ball passes the batsman and then it swirls away from the keeper. These kind of deliveries are the finger breakers for the wicket keeper. Luckily Rehan saw it all the way. Oh, that's a bad ball. That's a freebie. You cannot bowl those in a final when your score is just 140. Got to be careful if you're a KP bowler. Make them work hard for the runs. Is he trying too much? Just fell away slightly in his action, you may feel. Rehan's knockdown wasn't enough to prevent the boundary. But that swerve once again that caught Rehan off guard on that occasion. Yes, a late swing to the keeper. Otherwise, he would have stopped it. 5 wides added, takes Sindh to 9 in the second over at the moment. Bit muggy out there. The ball will swing. Good take. Oh, he's given a wide. Square leg umpire just said it's a wide, so after 5 wides, another one, and 1 for the over. You got to really see if that ball was high enough when it passed the batter, because sometimes you may get deceived by where the wicketkeeper takes the ball, which is way above his head. Fair enough call. Changed the side, now coming round the wicket to Saim. 1 for the over has been called. 6 wides already in the over and a single. Short mid wicket in place. Got to keep attacking. The slips have been removed. Always a never there for Ehsanullah. It was more for Arshad Iqbal. I think they've removed the slip for that gully fielder, because now he's come around the wicket, hoping to cramp Saim and get him to play one close to his body in the air behind square. That backward point is still behind square. And third man is also way inside the circle. 30-yard circle.
That's the fielder I'm talking about, Amir Azmat. This now is a short gully. There's a man in the deep in the background you can see as well. That's their third man. They're almost in a straight line. Upish and 4. That travelled like a bullet. Took that thick edge of the bat. It's been a big over. 11 of it. 14 for no loss. Last ball, last over. Was it a squeeze? Oh, it just went in the air off the edge of the bat. Third, fourth slip. It might have been, but away from that gully fielder. Ehsan suffers because of his extra pace. In the air, that's a call. Just landing outside the 30-yard circle. Shakil these days, not his belligerent self. At the start of the innings, he likes to take a look in. Once again, was surprised by that extra bounce. Lucky there was no fielder in that direction. That's the fielder you're talking about for Arshad Iqbal. They prefer to keep the slip for the left-handers. What's he asking for? Has it hit somewhere around? I don't know. Where did it hit? It's high. I thought it hit the glove. Interesting from Zamir Haider. It was high, all right. I think the first impact was on the glove with the naked eye. Yeah, it looked like somewhere around just the waist. It jagged in. Look at that. Yeah, it's just way too high. And I don't know what he's asking for. It never harms you for a good appeal. That's what Arshad Iqbal was doing. He moves across and then he tries to just scoop it. He doesn't realize that the ball goes almost like over the leg stump. A few words exchanged with Saim Ayub. Arshad Iqbal is probably just asking him, why don't you hit me? I think Saim has come up with these tactics to cope with that bounce. Moving across and just helping on its way. He's had a couple of attempts. It hasn't worked out. Arshad Iqbal is a fiery character. Let's have some fun. Come on. Do you like, well, friendly words exchange? Just a bit of friction that's nice. Just add spice to the game. As long as you're behaving. Definitely. You see, it can extract something like this. You try to get under their skin and they retaliate. 2 added to the total. Got away on that occasion. Saim Ayub certainly didn't like what Arshad Iqbal told him. Little bit of inexperience as the previous one, which instigated that little word from Arshad Iqbal. Then Saim reacted with an angry blow. Little bit of spice, little bit of needle. It's a big game. Nothing wrong with that. I don't know.
it's just the third over at the moment, and this is the 8th wide. That's not on. That's really not on. It's good to be aggressive, but you shouldn't allow yourself to lose your calm and your nerves. And that's what's happening to KP. Under pressure, 10 extras already. 8 of them wides. In contrast, Sindh just bowled the 1 wide in the entire innings. That's discipline for you. Misers. That's not nice. Have a big heart. Just one. Glove. It's just lands between the keeper and the wickets. Yeah, the rub of the green is with Sindh tonight. There's no doubt about it. On another day, it could easily have looped straight into the gloves of the keeper. It didn't go anywhere. That's good. That's good at the moment. Arshad Iqbal is trying to keep it very close, as close as possible to the body of the batter. He's not allowing the extension of the arms, and he's got some pace, Arshad. So he's going for him. Let's see if Sharjeel can improvise and get his shot going. Another wide. That's wide number 9. Out of 140, you -9 of wides, 2 leg byes. You're making it hard for yourself. In this power play, Sindh hasn't been able to put the ball away with this indiscipline from KP. They're almost up with the run rate. Trying. It's fine margins though with Sharjeel, because you don't want to stray onto his pads, onto his hips too much with this length, because he'll pick you off. Same time, you don't want to give him room outside the off stump. In doing that, they've conceded 9 wides. Yeah, there you go. He was waiting for that, and he got it. 26 for no loss. He'll pick you here all day long, Sharjeel. He loves them there. Fine leg up in the ring. He didn't break a sweat, and it went over the fence. Most runs since 2019 in this format. Sabzada Farhan, more than 1,000 runs. Sharjeel closing in on that, 879. Rizwan, the great Babar Azam in that list as well. Look at the number of games he played, just 15 at average and strike rate. Mind-blowing. Mohammad Imran Jr. into the attack. Runs, good stop by Arshad Iqbal. Got to put everything behind it. Every run is precious out here. The final of the Kingdom Valley National T20. It went in the air. Where was that gully fielder now? Arshad Iqbal, great effort. At the moment, KP is looking for that 1 wicket. Give him that belief. And the longer this Sindh pair bats on, that belief will disappear. High in the air. Is there an opportunity? No way. I said it at the start that KP likes to bang it hard in the surface, and these short balls might just not work against Saim Ayub and Sharjeel. It's a new ball, it's got pace on it, and it's going to travel. With the fine leg up in the ring,
It's really asking for trouble. With this pace and bounce, it's always going to go finer. And the top edge, well, it won't have mattered anyway because it landed about 10 yards over the fence. What's plan B for KP? Yeah, that's much better. Good comeback delivery. If you want to bowl the short pitch deliveries, you might as well have the fine leg and square leg back. Like I said, with this pace and this sort of carry, won't have mattered. More in hope than any anticipation. Oh yeah, go fetch it. KP bowlers are bowling the leg stump line and they are paying for it heavily. Back of the length. Saim was preempting that. Good movement in this pitch from a fuller length. KP never tried that. And now that both the openers are in, they're really taking good advantage of excellent bounce on this pitch. KP chasing the leather a little bit. There you go. Now on the other side of the ground, KP is leaking runs in the final. And on either side of the wicket, Saim Ayub does back a punch square of the wicket on the offside. Just good use of the hands, that bat speed, terrific. But the best thing is the balance. Look how close and underneath his eyes he made contact with this ball. Forget about that, Imran. Less than 100 required now. 99 left of 97. The start has given them an almost runner ball chase now. Wickets are needed. (16 of the over). 42 for no loss. खालिद हुसैन ने एहसानुल्लाह का एंड तब्दील किया है। उन्होंने इकलौता ओवर किया था मीडिया सेंटर एंड से जिसमें उन्हें लाइन इस दिन में मुश्किल थी। इस बार लेंथ भी कदरे उन्होंने फुल की और ये जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है ये भी दो धारी तलवार की तरह होती है। कई बार आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। यही हुआ है अभी तक इसका नतीजा, दोनों एंड से शॉर्ट पिच बॉलिंग करने का। और ये देखिए पहले फुल शॉट खेला, फिर फ्लिक किया और उसके बाद ये कट लगाया पूरी तरह अपनी पलकों के नीचे। इनके ज़्यादातर जो बल्लेबाज हैं वो टेक्निकली इतने करेक्ट हैं और बैकफुट पे भी बहुत तगड़े हैं। उनके लिए इस तरह की पेस पे ये लेंथ बिल्कुल भी कोई परेशानी का बायस नहीं बनती, इसलिए बहुत महंगा ओवर साबित हुआ क्योंकि साइम बहुत अच्छा खेलते हैं पिछली गेंद को। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा स्कोर ना हो चेस करने वाली टीम के सामने तो कई बार वो अपने फितरी अंदाज जो होता है खेल का उससे हट जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो है अपने अंदाज से हटे नहीं हैं। साइम और शर्जील इंतज़ार ज़रूर किया है इन्होंने गेंदों के अपने करीब आने का और उसके बाद रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया है। इसलिए सिंध के
ड्रेसिंग रूम को हम खुश और मुतमईन इस मौके पर देख सकते हैं। बैटिंग लाइनअप खासी लंबी है और ये 41 रन का जो हदफ है, इनके स्टाइल ऑफ प्ले को भी ये सूट करता है। इनका जो बैटिंग स्टाइल है मिडिल ऑर्डर का, ये लेंथ जो है ये इनकी गो टू लेंथ नहीं है एहसानुल्लाह की, लेकिन पहले 4 ओवर्स में क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग पर रन्स बन रहे थे, इसलिए इनको अपना जो प्लान ए है वो बदलना पड़ा। लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा नहीं। 1-2 गेंदें ज़रूर अच्छी ये डाल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि सिंध के पास और शजील और साइम के पास टाइम है, उनके पास ये लग्जरी है कि वो कुछ डॉट बॉल्स खेल सकें, वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई इन्हें ना जल्दी करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज इन्हें मिल रही हैं, रन्स इनके चल रहे हैं तकरीबन 9 की औसत से। काला शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, ये शर्जील खान का खासुल खास है, बिला कोशिश खेल दिया 4 रन के लिए। ये तो न्योता दिया है बिल्कुल उनके आंख में, हल्का सा बाहर निकला गेंद ऑफ स्टंप पे, खड़े खड़े खेला, शानदार शॉट। ये जैब करते हैं, बहुत ही उम्दा टाइमिंग इनके पास। तो जब ये इस तरह की शॉट खेलना शुरू करते हैं तो फिर ऑपोजिशन को समझ लेना चाहिए कि मुश्किल है, यहाँ आप गेंद नहीं करा सकते इन्हें। एक सेंचुरी बनाई शर्जील खान ने रात के वक्त ही बैटिंग करते हुए, जब गेंद बेहतर बल्ले पर आती है, क्योंकि सर इसकी तवक्को थी, इसलिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्योंकि रात को हमने देखा कि गेंद जो है उसको कम ही वो भीग पाती है, क्योंकि इतनी ओस नहीं गिरती, अलबत्ता इतनी ज़रूर गिर जाती है कि पिच के ऊपर उसका असर होता है, जिसके सबब गेंद ज़्यादा बेहतर बल्ले पर आने लगती है। आप थ्रू द लाइन खेल सकते हैं। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ये धचका ज़रूर लगा था कि 4 पेसर्स के साथ जा रहा है केपी, स्पिनर कोई ऑप्शन नहीं है टॉप की। खालिद उस्मान कर लेते हैं, कामरान गुलाम को ज़्यादा बॉलिंग करते देखा नहीं है। यहाँ पे किस बॉलर को वो रन रोकने वाला रोल देंगे, ये देखना पड़ेगा। जाइए और लाइए, ये बड़ा शॉट, बड़ा छक्का। शर्जील खान, उन्होंने यहाँ तंग आमद, बजंग आमद के मिजाक वो खतरा बने हुए हैं इस वक्त। फिर वही गलती की एहसानुल्लाह ने, स्पेस के साथ हार्ड लेंथ शर्जील के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। हल्का सा आगे गेंद किया था और उठाने में कामयाब हुए, थ्रू द लाइन खेला है। एक बार फिर खड़े खड़े पिछली टांग को थोड़ा सा कोलैप्स किया ताकि एलिवेशन मिले। लाजवाब टाइमिंग, और अब सिंध जो है वो अटैक करना शुरू हो गया। 50 मुकम्मल की, 54 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा फाइनल देखने को मिल रहा है मुल्तान के तमाशाइयों को, जिनकी कसीर तादाद पहुंची हुई है इस वक्त इस टेस्ट सेंटर में, जहां पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी होना है इसी बरस। और आप देख सकते हैं टॉर्च की रोशनियां, ये खुशी का इजहार है। इन दिनों क्रिकेट मैच का खासा बनता जा रहा है पाकिस्तान में, खासतौर पर एशिया में। शायकीन को भी एंगेज रखने का अच्छा तरीका है। अब्बास अफरीदी बॉलिंग में एक और तब्दीली, अच्छी डिलीवरी। इतना आसान नहीं है निकल कर शॉट खेलना इन फास्ट बॉलर्स के सामने, क्योंकि लंबे कद के हैं। क्रीज का भी इस्तेमाल किया इस बार, गेंद ऑफ द विकेट तेज निकली। इसकी जरूरत भी नहीं है इस वक्त, थोड़ा सा सिंगल निकालना चाह रहे थे। और शजील क्योंकि पिछले ओवर में इन्होंने बहुत ही
जानदार शॉट मारी है, उनको स्ट्राइक देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी साइम को। यहाँ स्लिप में लाया जा रहा है, विकेट लेने के अलावा कोई चारा नहीं। खालिद उस्मान ये जानते हैं। अच्छा खेला, पूरी तरह इख्तियार में नजर आ रहे हैं। पहले 2 ओवर्स के बाद साइम अयूब जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, हालांकि ये आप जब इनको देखते हैं तो ये ज्यादा फिजिकली आपको ताकतवर लगते नहीं हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में 18 छक्के लगा चुके हैं। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आगे गेंद हो पीछे हो, स्पिनर्स के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई ज़्यादा वीकनेस इनकी नज़र नहीं आई। एफर्टलेसली खेलते हैं, बहुत अच्छा टाइम करते हैं गेंद को, ऑन साइड ऑफ साइड स्वीप सारी शॉट्स मौजूद हैं इनके पास। फ्लैश करने के लिए गए, खुश उसलूब बैट्समैन है साइम अयूब, बड़े अच्छे टाइमर हैं, रिस्ट वर्क बड़ा कमाल का है। क्रिकेट का इन दिनों दौर दौरा है। मुत्तहिदा अरब इमारात मेज़बानी करने जा रहा है डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 की। अक्टूबर के साथ ही चैंपियनशिप शुरू होगी और 9 दिन तक जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत की टीमें भी इस कार्रवाई का हिस्सा बनेगी। हवा में खेला लेकिन पहुंच गए इमरान। अभी तक बिल्कुल एकतरफा ये फाइनल साबित हुआ है, और हालांकि पहला मैच जो था वो जीत लिया था खैबर पख्तूनख्वा ने। लो स्कोरिंग मैच रहा रावलपिंडी में सिंध के खिलाफ, फिर सिंध ने एक और लो स्कोरिंग मैच में केपी को यहाँ शिकस्त दी मुल्तान में। आज एक और लो स्कोरिंग मैच है। खैबर पख्तूनख्वा ने टॉस जीत के सिंध को डिफेंड करने की दावत दी और ये उनकी स्ट्रेंथ है। आला साइम अयूब ये अपना जौहर काबिल दिखा रहे हैं, एफर्टलेस। प्रेडिक्टेबल हो गए थे बहुत ज़्यादा अब्बास अफरीदी, और बहुत अच्छा इनोवेट किया यहाँ पे। देखा भी नहीं, देखना गवारा भी नहीं किया, जानते थे फील्डर अंदर है, टाइम इतना कर दिया। ये देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये झलकती है इनकी बैटिंग में, देखना बिल्कुल नहीं गवारा किया। बहुत ही कंट्रोल के साथ, कमांड के साथ ये शॉट खेली। इनको 22 रन की मजीद जरूरत है टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर बनने के लिए साइम अयूब को। और ये हवा में खेला और मैदान के बाहर यहाँ पर कट किया साइम अयूब ने, जिनका कद छोटा है लेकिन मर्तबा बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ मुल्तान पहुंचकर छक्के पर उनने ये ओवर साइन ऑफ किया। सिंध 66। साइम अयूब का बल्ला रन उगलता ही रहा है नेशनल T20 में। इस बार बहुत विथ मिल गई थी और पूरे जोर से ये शॉट खेला। एक लम्हे के लिए लगा जरूर था कि शायद थर्ड मैन का फील्डर इसे कैच करने में कामयाब होगा, लेकिन नहीं, पूरी फॉलो थ्रू के साथ ये शॉट खेलते हैं, इसलिए पेस भी काफ़ी थी। 6 रन हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा की बॉडी लैंग्वेज गिरती जा रही है। 66 बगैर किसी नुकसान के 6 ओवरों के इख्तिताम पे। बॉलिंग की कमान खासी हद तक उतर चुकी है। पहले 6 ओवर्स में वो जो शॉर्ट पिच बॉलिंग के साथ हमला किया गया था, उसका जवाब इन दोनों ओपनर्स के पास था। और पावर प्ले मुकम्मल होने के बाद जो है स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। आदिल अमीन आएंगे गेंद करने के लिए। ये दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। ज़्यादातर सिंध की बैटिंग लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं। इससे मुमकिन है कि आज जो है 2 से ज़्यादा ओवर कर जाएं ऑफ स्पिनर। बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते देखा नहीं इन्हें पिछले कुछ मैचेस से। इनका रिदम अब इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ बात और साइम अयूब की होनी चाहिए जो बहुत ही मुतासिर कुन रहे हैं।
क्योंकि 2 बरस पहले जब ये नज़र आए थे पाकिस्तान सुपर लीग में कराची में 1.5 बरस पहले, तो ये कामयाब नहीं रहे थे। और लेकिन जो नबील हाशमी दरअसल वो इनको लेकर आए थे टीम में, और वो उस वक्त भी उनका इसरार था कि ये ज़रूर कुछ कर गुजरेंगे। बहुत ही गैर मामूली इनका टैलेंट है, तो वो जानते थे इस शख्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका एतमाद रहा नबील हाशमी का। तो नज़र जो है वो बहुत मैटर करती है, चाहे वो कोच हो, कोई भी पिक करने वाला प्लेयर की नज़र। कुछ ऐसे कोचेस या लोग होते हैं जो ये बहुत जल्दी परख लेते हैं कि ये अभी ना से ही आगे जाके बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। कुछ क्रिकेट मैंने भी इनके साथ खेली है अंडर 16 के साथ, जब हमारी पाकिस्तान टीम के मैचेस होते थे तब ये बहुत ज़्यादा शॉट्स जल्दी दिखाने चले जाते थे, टेम्परामेंट की कमी थी। लेकिन अब मैं अक्सर बात करती हूँ कि इनका जिस तरह का टेम्परामेंट है, बहुत जल्दी बहुत मैच्योर हुए हैं। स्पिनर जो हैं ये एक और पहलू है इनके खेल का, जहाँ ये बेहतर हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। यहाँ पर मिस फील्डिंग जिसके केपी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 7 के बाद 70 पर कोई नहीं। इस पावर प्ले में नजर आए ये दोनों ओपनर्स भी मजबूत, और ये इमरान का ओवर खासा महंगा रहा जिसमें अच्छा हुक शॉट खेला साइम अयूब ने। उसके बाद स्क्वायर कट किया, शर्जील ने बॉलर पे लॉफ्टेड ड्राइव किया, और साइम अयूब ने ये फ्लैश करते हुए छक्का लगा दिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अभी तक ओपनर्स की जानिब से सिंध के। शर्जील खान अब अपनी रवायती बैटिंग करने की उनकी कुछ झलकें नज़र आ रही हैं। साइम अयूब बहुत ही कंट्रोल के साथ बैटिंग का आगाज़ करते हैं, और आज फाइनल के मौके पे इन दोनों की ये ओपनिंग पार्टनरशिप देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलें अभी तक नज़र आ रही हैं कि बॉलिंग और इवन फील्डिंग में भी इनके जो कंधे हैं वो गिरने शुरू हो रहे हैं। अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। सरवर अफरीदी जिनको वीक लिंक समझा जाता है इस बॉलिंग अटैक में, लेकिन अक्सर देखा गया कि ये विकेटें ले जाते हैं क्योंकि कमतर बॉलर जानकर बैट्समैन उनके पीछे पड़ते हैं, उसी में फिर वो अपनी विकेट हार जाते हैं। लेकिन अब ये मैच जो है ये निकलता जा रहा है, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है वही सूरत हाल है इस टूर्नामेंट की भी केपी के लिए। ये दिफाई चैंपियन है टीम। हवा में खेला और इस बार क्लियर नहीं कर सके, और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ये सॉफ्ट डिसमिसल। साइम अयूब ये मिड ऑन से ज्यादा वाइड खेलना चाहते थे, लेकिन आखिर में गेंद को प्लेस नहीं कर सके। सर्वर ज़्यादा रफ्तार देते नहीं है, इस वजह से ये शॉट जो है वो जहाँ वो खेलना चाह रहे थे, काफ़ी स्क्वेरर खेलना चाह रहे थे, खिलाइयों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लैक ऑफ पेस की वजह से ये सीधा ट्रैवल हो गया। और 9 भी उन्होंने जो गलत पकड़ी, बड़ा नुकसान इन्हें उठाया। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन अब इन्हें वापस पवेलियन जाना पड़ेगा 36 बनाकर 70 पे 1 से। सिंध के कप्तान साउद शकील खुश होंगे काफ़ी इस इब्तिदा से। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया ओपनर्स ने। शकील अभी मौजूद हैं दूसरी
दूसरे एंड पे तो ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी। इन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की पिछले कुछ मैचेस में देखा, जिस तरह महारत के साथ अपनी शॉट्स खेलते नजर आए, ये भी सिंध के लिए एक अच्छा साइन था। फिर वही हुआ है जो हम बात कर रहे थे कि अक्सर कमज़ोर जानकर बैट्समैन जाते हैं हमला करने के लिए। मोहम्मद सरवर अफरीदी जो हैं इसी में विकेटें ले जाते हैं और यहाँ पर उनने अनमोल विकेट हासिल की। साइम अयूब की जिन्होंने 24 गेंदों में 36 रन बनाए। ये अच्छा शॉट। अब अपने अंदाज से भी अगर सऊद खेलेंगे तो इनकी टीम पहुंच जाएगी। 5.5 टीम के औसत दरकार है, 9 विकेटें हाथ में हैं। ये देखिए उतनी रफ्तार नहीं मिली, गेंद को खेलना चाहते थे वाइड लॉन्ग ऑन की जानिब, और क्योंकि पेस कम थी इसलिए सामने खेल गए। यही खासियत है सरवर अफरीदी की, क्योंकि ज़्यादा रफ्तार ये देते नहीं है, इसलिए बल्लेबाज को खुद थोड़ी जान लगानी पड़ती है। लेकिन जितना आपने स्क्वायर खेलना होता है थोड़ा आप लेट खेलते हैं। पाँव भी इनका सीधा निकला, अगर थोड़ा सा ऑफ टर्म पे निकलता और गेंद को और करीब आने देते तो शायद वेकेंट एरिया में चला जाता। इनको मायूसी ज़रूर हुई है, आज भी जिता के सिंध को ये नॉट आउट जा सकते थे। शर्जील के लिए लॉन्ग ऑन पीछे है, डीप मिड विकेट पर अरशद इकबाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कमज़ोर कड़ी थी उनकी बैटिंग, और वो जो एक ख़तरा ये जानकर यहाँ मुल्तान पहुँचे थे आज वो उनके सामने आ गया। इनकी बैटिंग नाकाम हो गई फाइनल के अहम मौके पर। इसलिए जो स्कोर बोर्ड के दबाव का बॉलर को भी सामना है। हालांकि बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है, रन्स बहुत कम थे और रात के वक्त बैटिंग करना और ज़्यादा सहल हो गया था। शायद पहले जो बैटिंग करने की ख्वाहिश थी वो भी हम कह सकते हैं कि किसी हद तक ले डूबी इनको। क्योंकि जब ये आज अगर हार जाते हैं और पलट के देखेंगे तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी तो टारगेट पोस्ट करना और फाइनल में एक ऐसा टारगेट जो विनिंग हो वो पहले तो डिसाइड करना मुश्किल होता है। फिर इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पर बहुत रिलाई करते हैं। सिंध को पसंद है चेस करना, वो उन्होंने उनके हाथ में एक चीज़ दे दी। फिर पेसर्स पे रिलाई किया। मेरा ख्याल है इमरान खान सीनियर को ना खिलाना भी गलती थी। पावर प्ले खत्म होने के बाद शर्जील जो हैं ये कदरे खबरदार होकर खेल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ ज़्यादा खतरा मोल लिए बगैर भी आप पहुँच जाएंगे हदफ तक। लेग स्पिनर टीम में शामिल नहीं। या मास खान इससे पहले विकेटें ले रहे थे। इमरान खान सीनियर्स ने इब्तदाई मैचेस खेले थे, बाद में ये भी टीम में अपनी जगह से हाथ धो बैठे। जब फाइनल होता है उसके लिए आपको सीनियर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। वो एक्सपीरियंस, तजर्बा, किस जगह पे कौन सी गेंद करनी है, किस तरह सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना है, ये ज़रूरी होता है। इनसाइड एज, इससे कोई खतरा नहीं। वापस जाना पड़ा सऊद को और ये अच्छा ओवर अफरीदी का, सिर्फ 2 रन दिए और अहम विकेट भी साइम की 72 पर 1। No comparison. If you talk about the same stage, 8 overs, Khyber Pakhtunkhwa were 54 for 3 and Sindh side 72 for 1. Such a wow performance by Sindh side. They just outplayed this dominant KP side. They now require 69 of 72.
Oh, that's hit hard, really hard. Shajil Khan now playing with authority. Boundary to start off this over. We're down to part-time spinners. Fast bowlers going for runs, and that was my worry at the time of the toss when he left out Maaz Khan, their specialist leg spinner. Now he himself, Khalid Usman, Adil Amin bowling. Need to get Sharjeel quickly, because if he stays for a while, and even that while is damage done. Now when you need 64 or 69, you have to take those remaining 9 wickets to win it. Well, don't leave your seats, because if you remember what happened in the game between Northern and Southern Punjab, 80th Southern Punjab, I mean, in the span of 1 over, things changed. They defended around 130 something. Yeah, but this is a difference inside. They got a very formidable middle order. They got Sarfraz Ahmed, Umair bin Yusuf, Danish Aziz. They all can bat, and they know how to chase. They love it. We've seen this in this tournament, that they love chasing. After 9, it's 78 for 1. Mohammad Sufyan, the winner of the Kingdom Valley motorbike in this contest by a ticket, and through the lucky draw, he is a proud winner. Ghulam Hussain Shahid, the chairman of Kingdom Valley, handing over the key. Server has bowled well. He's got that 1 wicket in his first over. It was 129 that they defended Northern against 80 of Southern Punjab. 3 wickets in an over. Mehran Mumtaz with 1 run out in that. And we've seen Khalid Usman use Mohammad Sarwar inside the circle, inside those 6 overs. But for some odd reason, he was not used today. When they were looking for wickets, it was just one-dimensional sort of bowling that KP had. All those, they hit the deck hard. Nobody really took the chance of bowling the ball up to the batter, make them drive. They didn't do it. Instead, they were up to that short deliveries, too many short deliveries, too much desperation that have costed them a lot. It's way too easy at the moment for this inside. They can do it in singles. 62 of 64, no problems whatsoever. A proud captain he is, South Shakil. He's done well all throughout the tournament. They've played some close game. The last over finishes. Now they're on the verge of winning this national T20 for the first time. Excellent. Yes, hit hard, but the fielder is there. So what can be done to get a wicket here? There's one way. You can target Sharjeel Khan's end when he's running. That's one way. I'm not kidding. That's one way of doing it. Yeah, but 1 wicket might not affect. They need 1, 2, 3 maybe quick wickets. Yeah, you need to make inroads first. Create an opening. If you've studied the previous games, what are the weaknesses? What does South Shakil not like when he's facing? Should have a good half an hour timeout. Get back to the
dressing room, discuss, look at things, watch the footage, come back. There's a very happy Sindh camp as the head coach sitting right there in the background, in the back row. He's pretty happy with the proceedings at the moment. Why shouldn't he be? Leading edge, flying to third man, and good stop there. Arshad Iqbal. That's the effort, that's the type of effort that lifts the spirit of the team. Coming from a fast bowler, thick outside edge. Everything has just worked Sindh way. Because if you're defending that low total, you need luck to be on your side. That has not happened for KP. What I like is the recovery. He dived, outstretched, and then immediate recovery. Release the ball. That's the modern way. Remember back in 20 years ago, you dive and you just diving forever. You're just there, holding the pose. Now they teach you to recover, get back on your feet immediately and get into the throwing position. Release the ball as quick as possible. Drive. Wow. How has he made that gap? There was hardly any room. Beautiful shot. Fantastic. Look at that for timing and placement. Everything right about this shot. Just waited enough and placed it right between the two fielders. Sal Shakil must feel very confident now. 55 of 60. It was the first time Sindh lifting the trophy if they win this since the new system. They've been semi-finalists twice. I think the inclusion of Saim Ayub, Asif Mahmood, that has really worked for them. Faraz Ali, Saad, Ibrar, all of them. There's new young faces. They've all worked for Sindh. And now they're on the verge of winning this title. Very good. Look at that camp. They're smiling finally. They had their fingers crossed. Ghulam Ali is also smiling. Why not? His team has made him proud. They played some fantastic cricket in this tournament. They won some crunch games. They've chased down totals. They've beat some good teams. They've entertained the crowd. They've done everything right in this tournament. Oh, where is Sal Shakil going? Your partner will not take a single like that. Yeah, just don't gift a wicket to them at this point. That was that shot. Look at that. Beautiful. No need to explain that. The picture says it all. Inside edge. No, nothing's going right for KP at the moment. Everything is going Sindh's way. They are supporters of KP. I don't know why they're happy, but this is some good quality reply from Sindh. They all count. Like I said, looks beautiful or not, they all count. As long as he stays, everything is good for Sindh. Because he can change the game in 1 or 2 overs. He's taken his time, 29 deliveries, unlike Shajil, but it has worked. It's a big final. They wanted him to stay. This time he shows some cover drive with a flat bat.
If you can play it, I can do it even better. That's what Shajil is saying to Saud. Oh, that I feel sorry for somebody like Khalid Usman. He's frustrated. Nothing has worked for him. Look at that, standing and delivering it. Hands, quick hands. It's way too easy for Sindh at the moment. The toying with these bowlers. There's Sarfaraz Ahmed on the left. Just there you'll see him now. There he is. He's played 4 national T20 finals. If you include all of them before the new system, he hasn't won it as a player I'm talking about. As passes through backward point, but there's protection in the deep. Worried faces, tense faces, and why not? They're way behind in this game, this KP side. Nothing has worked. I'm really not sure about the planning of this big final from them. Winning the toss, batting first, when knowing that Sindh are very good with the chase. They chase down anything. Look at that face from Imran Khan Senior. He was not included in the side. I think that was not a good idea also. He would have bowled nice on this pitch, according to the pitch. Pitch would have suited him. Nothing actually working for them. All the plans from KP just seem to be neutralized by the opposition. Nothing seems to be working for them. Runs are coming in easy. Required is 4.9. It's irrelevant when your current is 8.86. Expecting a fighting final, but just didn't happen. They kept losing wickets. And I think the jolt of losing Saifzada Farhan and Kamran Ghulam with almost nothing on board hit them hard. Couldn't recover from it. They didn't bat the full 20 overs even. He slaps that. Just a single. 11 gone, 97 for 1. Now back of the hand delivery. Easy pickings for Shajil Khan. The sort of form he is in, he's not going to miss out on these. 44 or 54 now. He has brought back his ace bowler, Arshad Iqbal. Desperate to get 1, 2, 3 maybe wickets that might bring them back, because at the moment it's way too easy for Sindh. 44 or 54. That's not the type of final that we were hoping. Sindh has just dominated them in every department. 2 overs for 13, Arshad Iqbal in here to take a wicket. And he has to watch the ball sail. Pace on, Sharjeel on. He's in a hurry for sure. Maybe has a flight to catch. He wants to finish it early and with authority. Look at that pickup. Stand and deliver. We are driving down. There are no flights. What flight is he catching? You're going to Islamabad, he's going to Karachi maybe. Different destinations. Oh, he's from Hyderabad. I'm sure there's no flight going there. Oh, he's shifted to Bahawalpur, someone's saying. So he can just take a car. This is around the corner. Oh.
38 of 53. You can just tell from the body language of KP fielders and bowlers, the heads have gone down. Probably they're just given up on the hope that they will make a comeback. 38 runs, good batting lineup, nothing working their way. Khalid Usman has been such a good captain, but today I think he's made a couple of mistakes in his playing 11, winning the toss, batting first against a side like Sindh. It's a question mark for me. Again, over the fielder at square leg. Second big shot maximum in the over. Wonderful 50. Must be a proud man, Shajil Khan. He's delivered at the right time. Scored 100 against Balochistan and now a 50 in the final. Wonderful. He deserved all this standing ovation. And this last shot, that wrist work was amazing. Look at that. Their ace bowler, I don't care. Length. It's just that arc. He swings the bat, it comes in that radar and it just travels. Change in field. Long on is up now at mid-on. There is a fielder at mid-wicket. Every option to get a wicket. He hasn't got hold of it, should be out. Yes, he's gone. Second time a batsman scores a 50 and then loses his wicket. Got to finish the game. 2 down, Arshad Iqbal gets his man. Well, it's a little too late for KP to celebrate. But you never know. Never know. Well played, Sharjeel. He's done his job as the opener. Got big on him. The footwork quite not there. No problems for Sarwar. But nevertheless, a fantastic inning by a fantastic player, Shajil Khan. It was needed and he has delivered. 53 of just 36. It's 109 for 2. I just love the passion of this new Sindh side. They've played some brilliant cricket, they've supported each other, they've been there for each other, and the results also going their way. They're just 32 runs away now as Umair bin Yusuf walks in. Star from yesterday's game helped the side get into the final. Umair bin Yusuf, a partnership along with Anwar Ali. Arshad is bowled well. Yes, he's been hit for 2 sixes in the over, but overall numbers 1 for 25. They need a couple of wickets here just to test Sindh. Can they handle the pressure? Yes, you might feel 32 required, but these are 32 valuable runs. And if they can get wickets here, let's make this final interesting. Ali agrees with me. You can see he's nodding his head, saying yes, anything is possible. Yeah, definitely. In cricket, anything is possible. But if you look at the numbers, they say otherwise. Oh, how about that? Are you sure? Yes, pretty much.
but they got enough deliveries, 49 of them. This one kept low, nipped in a little bit. See, the luck is not even on their side. On some other day, it might have gone to hit that off stump. But it's just that sort of a day for KP, that it has not worked for them. Luck's not on KP's side today. Is it on yours? Yeah, it's been since the time I've come to Multan. I know how. Well, let's talk about this boundary. -4. He's continuing where he left off yesterday. Umair starts off with a 4, 1-1-3 for 2. बड़ा दिलकश शॉट खेला, बैकफुट पार्टनरशिप, और ये खासा है उमैर बिन यूसुफ का कि वो अच्छी गेंदों पर भी बड़ी आसानी के साथ चौके लगा देते हैं। जिस तरह इस बाउंस को कोप किया उन्होंने, बहुत ही शानदार। और अभी बिल्कुल नए आए हैं क्रीज पर, दूसरा ही बॉल था उनका। चीज को जाहिर कर रहा है कि अच्छी फॉर्म में है। बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है उमैर बिन यूसुफ भी। खालिद उस्मान जो हैं, पहले उन्होंने सोचा था खुद बॉलिंग की जाए, कि राइट हैंडर आ गए हैं, लेकिन फिर जानते हैं कि वक्त हाथ से निकल रहा है, इससे एहसानुल्लाह को वापस लाया जाए। ज़्यादा जो है इस वक्त दूर इनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शायद 19वें 20वें ओवर की नौबत ना आए, तो ये जो एक हथियार है इसको अभी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। स्ट्राइक बॉलर हैं एहसानुल्लाह। बिल्कुल, इस वक्त उन्हें बात के लिए बचाने का कोई जवाब बनता नहीं है। आखिरी हरबा साबित हो सकता है ये खालिद उस्मान का। अच्छा खेला सऊद ने। और यहाँ इस नेशनल T20 टूर्नामेंट के दौरान लकी ड्रॉ पर मोटर बाइक्स का जो इनाम है, ये आप देख सकते हैं। ये लकी ड्रॉ इस वक्त, ये खुशकिस्मत कौन होगा? ये गुलाम हुसैन शाहिद जो चेयरमैन हैं किंगडम वैली के, वो टिकट निकाल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भैया, आप जो जीते हैं। कुछ देर के बाद ये जीतने वाला का जो नाम है वो भी आ जाएगा स्क्रीन पर। मोटर बाइक हो गई एक और। यहाँ मुल्तान के तमाशाइयों के लिए ये दोहरी खुशी है। वाइट बॉल और मोटर बाइक का टिकट निकला, और इनाम के हकदार तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी जल्द ही। इस फाइनल की टैक्टिकल अगर बैटल देखी जाए तो केपी और सिंध के दरमियान जो हिकमत अमली की जंग थी, वो तो सिंध ने वाज़े तौर पे जीती है। यहाँ पे उन्होंने स्पिनर भी अपने 11 में शामिल किए, और उनका जो मिडल ऑर्डर है वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा करेक्ट बैट्समैनों पर मुश्तमिल है। इस तरह की पेस और बाउंस से मरूब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि रेड बॉल के भी अच्छे क्रिकेटर हैं जो सिंध का मिडल ऑर्डर है। और फिर जब फाइनल में इतने लड़खड़ाते टीमें पहुंची हैं, तो कहीं ऐसा होता है कि सांस फूल जाता है फाइनल में। अच्छी डिलीवरी और रफ्तार, उछाल, विकेट कीपर को अक्सर एहसानुल्लाह की जो गेंदें हैं इस टूर्नामेंट में, ये अपनी पेशानी के सामने कलेक्ट करना पड़ी है। T20 में अक्सर बात बैटिंग की होती है, पावर प्ले की, हिटिंग की, चौकों छक्कों की, लेकिन ये जब से एहसानुल्लाह इनकी एंट्री हुई है, जब ये बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो ये सारी नज़रों का मरकज़ बन जाते हैं।
और बिलाशुबा ये हम कह सकते हैं ये भी फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है इस नेशनल T20 कप के। एहसानुल्लाह और खेला हवा में और तकरीबन हाथों में गेंद आ चली थी। अब्बास आफरीदी आखिर में अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सके, गेंद उनकी तवक्को से ज्यादा तेज थी। कि वही एक्स्ट्रा बाउंस जिसकी आप बात कर रहे थे, भारी एज लगा और अगर अब्बास आफरीदी जैसे तवील कामत खिलाड़ी ना होते तो ये छक्का हो जाता। अच्छा टाइम किया अपनी जंप को, लेकिन बॉल को हाथों में थाम नहीं सके। शायद उसी वक्त बॉल को वापस मैदान में फेंकने की भी उनकी ख्वाहिश थी, दोनों काम एक साथ करने थे उन्हें, वो ना कर सके। ये जो पोजीशन है थर्ड मैन की, अक्सर देखा जाता है फील्डर जो है वो गेंद की रफ्तार का अंदाजा नहीं कर पाता। वैसे भी क्योंकि ये बड़ा वसी मैदान है और मुश्किल हो जाती है इस तरह कोशिश। बिल्कुल, और आप एहसान की बात कर रहे थे, ज़रूर उन्होंने इस टूर्नामेंट में काफ़ी तवज्जो हासिल की है, लेकिन यहाँ इस फाइनल में उन्हें ये भी पता लगा होगा, ये भी लेंथ देखिए, फिर पीछे थी, हाथ चलाने का मौका मिला और थाम कर जब वापस फेंकने की कोशिश की तो वो काबू नहीं रख सके। जो फ्लिक थी तो बॉल उनके हाथ से फिसल गई, अगर उछाल देते तो वापस आकर कैच करने की पोजीशन में होते। अच्छी एफर्ट थी फिर भी। जी हाँ, और थोड़ी सी इनको ये भी फिक्र थी कि इनका पाँव जो है शायद ज़्यादा करीब हो इस बाउंड्री के सर से भी, इसे सिर्फ आगे कैच पकड़ने की फिक्र नहीं थी, पाँव बचाने की भी फिक्र होती है। और तकरीबन स्क्वायर कट करते हुए प्ले डाउन हो चले थे, अभी रफ्तार से मुतासिर कर रहे हैं और एक बरहम फास्ट बॉलर मुल्तान में ये हमने पहली मर्तबा नहीं देखा। अरशद इकबाल भी काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। मैं एहसान की बात कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने तवज्जो हासिल की इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने ये सबक भी आज सीखा होगा कि जो आउट करने वाली लेंथ है, ख़ास तौर पे जो पेस बॉलिंग के अच्छे प्लेयर्स हैं, उसके लिए उन्हें वो फुलर लेंथ डेवलप करनी होगी। क्योंकि आज जब उन्होंने फुल बॉलिंग की कोशिश की तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो उसमें कोई ज़्यादा दम खम नहीं था और शर्जील ने उन्हें 2 छक्के भी मारे। और ये शानदार शॉट, गैर मामूली छक्का। उमर बिन यूसुफ ये फास्ट बॉलिंग खेलना जानते हैं और इसमें कोई कलाम नहीं, खास तौर पर ये अपर कट करने के बाद। भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक, कलाइयों का भी अच्छा इस्तेमाल किया, अपने लिए खुद रूम क्रिएट किया और बाउंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ मैनेज किया। यही मैं बात कर रहा था कि जो अच्छे रेड बॉल प्लेयर्स हैं, जो अच्छे फास्ट बॉलिंग को खेलने वाले प्लेयर्स हैं, उन्हें इस लेंथ से आप मुसलसल परेशान नहीं कर सकते। 123 पर 2। ये देखिए लकी ड्रॉ में ये वो साहब हैं जिनकी मिल्कियत हो गई अब ये मोटर बाइक, और ये आप इससे चलाते हुए जा सकते हैं। ये हर सफ़र का हम सफ़र, और सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ सिंध का भी तय हो चला है। खुश नसीबी भी साथ दे रही है। सऊद शकील ऑफ साइड में खेलने के लिए गए, बाहरी किनारा लगा, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है आज। हाई बैकलिफ्ट के साथ बैकफुट पंच करना चाह रहे थे, लेकिन इस पोजीशन में स्लिप में कोई फील्डर्स नहीं है, इसका फायदा उठाया सऊद ने। सिंध की टीम की मुकम्मल डोमिनेशन इस मैच में जारी है और लगता ये है कि ये बिल्कुल इस जीत के करीब पहुंच गए हैं। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तारिक ये कहना होगा। यहाँ इसमें कोई शुबा नहीं, एक नई टीम तश्कील दी गई थी और इसके लिए ताली बजनी चाहिए जो इनके हेड कोच हैं गुलाम अली, जो इससे पहले जूनियर टीमों के साथ थे। सेकंड 11
से बेशतर खिलाड़ी वो अपने साथ लेकर आए जब उनकी प्रमोशन हुई फर्स्ट 11 में। ये पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे ओपनिंग बैट्समैन भी रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का और खिलाने का इनको तजुर्बा है PIA के दिनों से। इन्होंने 4 टाइटल जीते थे सिंध के लिए सेकंड 11 में और एक अंडर 19 टीम के साथ भी कोच के तौर पर टाइटल जीता। सऊद शकील ने इन्हें बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, मैदान में पहुंचकर जितने भी इनके मंसूबे थे उनको अमली जामा पहनाया। शानदार आला शॉट, एक और छक्का। और उमर बिन यूसुफ ये बड़े मुनफरिद बैट्समैन हैं और गैर मामूली जगहों पर बड़े शॉट खेल जाते हैं। हाँ, ये भी देखिए बिल्कुल लेंथ बॉल था, बाउंस को बहुत अच्छा कोप किया और जब सैम छक्का मारते हैं तो वो बॉल की तरफ नहीं देखते, लेकिन उमर बिल्कुल आखिर तक गेंद को देखते रहे कि कितनी दूर जाके गिरी है। खूब उन्होंने लुत्फ उठाया अपने शॉट का और यहाँ पर आए हुए तमाशाइयों ने भी। ये हैप्पी हंडिंग हम ग्राउंड कह सकते हैं सिंध और कराची के खिलाड़ियों के लिए। यहाँ कराची ब्लूज की टीम चैंपियन बनी थी, उसने पहला जो नेशनल T20 कप का टाइटल जीता था 2016 में। और आज सिंध की टीम ये चैंपियन बनने के बहुत करीब है। अब ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई इस मैच में बाकी रह गई है। बिलाशुबा ये हकदार थे उनकी टीम इंतज़ामिया कि नया ऑलराउंडर आसिफ महमूद, सरफराज अहमद का तजुर्बा साथ साथ था इन नौजवानों के। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि इतनी बड़ी कामयाबी बगैर किसी जामे हिकमत अमली के मुमकिन नहीं। जो हिकमत अमली बनाई गई उसमें भी काफ़ी जहन इस्तेमाल हुए, लेकिन फिर उस हिकमत अमली को मैदान पर आकर इस तरह एक्सिक्यूट किया, दाद देनी होगी। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं सऊद शकील और उमर बिन यूसुफ, ये पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेलते हैं। सरफराज अहमद, मीर हमजा भी उसी क्लब से खेलते हैं। तो ये भी एक इस टीम के यकजा होने की वजह है। क्लब क्रिकेट इन खिलाड़ियों ने ज़्यादातर एक साथ खेली थी। साइम अयूब भी इनके क्लबमेट हैं। बिल्कुल, अब फतह के जश्न की तैयारियों में है। सिंध की पूरी टीम मैदान पर उतर आई है, लम्हे का इंतजार कर रहे हैं जब विनिंग स्ट्रोक लगाया जाएगा। एक लम्हे को सोचा था कि गेंद को रैंप किया जाए या अपरकट खेला जाए, लेकिन वाइड जानकर जाने दिया। शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी रही है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरी जानिब अपने टाइटल का दिफा नहीं कर सकी और टीम को फाइनल जीतने की एक आदत सी हो गई थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 2 बार चैंपियन बने। नेशनल T20 कप का टाइटल इन्होंने रावलपिंडी और लाहौर में जीता। मुसलसल 2 साल इस साल एक नौजवान टीम के साथ फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया और ये बिल्कुल जज्बात ही मुख्तलिफ हैं इन चेहरों पर। मुल्तान स्टेडियम बोगी ग्राउंड रहा है KPK के लिए। दूसरा फाइनल यहाँ पर वो खेले और पाकिस्तान कप में बलोचिस्तान के हाथों उन्हें शिकस्त हुई और आज यहाँ सिंध के हाथों बिल्कुल आउट क्लास हो गए हैं 14 के बाद 137 पर 2। बहुत ही लुत्फ उठाया आज की शाम तमाशाइयों ने भी। सिंध की मुकम्मल डोमिनेशन का उन्होंने यहाँ पर हाल देखा और बहुत ही अच्छी बैटिंग शर्जील ने की। साइम अयूब के स्ट्रोक प्ले ने भी खासा जोश गरमाया यहाँ पे आए हुए शायकीन का। और अब सिर्फ 4 रन बाकी बचे हैं। यहाँ
सवाल ये है कि क्या सऊद जो हैं ये खुद ये फिनिशिंग किक लगाएंगे इस फाइनल में, लेकिन उनमें ज़्यादा जल्दी नहीं है। उमर बिन यूसुफ की भी तारीफ होनी चाहिए, इन्हें रेड बॉल क्रिकेट से मंसूब किया जाता था, हमेशा से इनके पास टैलेंट था और T20 में इन्होंने अपनी धाक बिठाई। सबसे मुतासिर कुन कारकर्दगी का इन्होंने मुजाहरा किया। कल सेमीफाइनल में बड़ी लाजवाब इनिंग्स थी, नॉट आउट गए, आज एक बार फिर फाइनल में नॉट आउट गए। आसाब शिकन जो मरहले हैं वो इन्होंने तय किए अपनी टीम के लिए। ओपन करते हैं रेड बॉल से, लेकिन यहाँ मिडिल ऑर्डर में खेले। कल की जो उनकी इनिंग्स थी, जिस तरह उन्होंने मिडिल ऑर्डर को जोड़ के इकट्ठा रखा और चेस को डीप लेकर गए और वापस आए, नॉट आउट, दाद देनी होगी बिलाशुबा। अच्छा तेज बाउंसर, ये पसंदीदा लेंथ है इमरान जूनियर की। यहाँ इमरान जूनियर जो हैं ये चाहेंगे, खालिद उस्मान भी जो इनके कप्तान हैं, कि इन्हें एक मुस्तकिल लेंथ पर बॉलिंग करना आ जाए। शॉर्ट पिच बॉलिंग पर इनको विकेटें मिलती हैं, एग्रेशन ये दिखाते हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में कामयाबी के लिए उस लेंथ को हिट करना भी ज़रूरी होता है। ये उससे या तो आगे रहते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। दो रन का और इजाफा, तो इस तरह दोनों टीमों का स्कोर अब बराबर हो गया और सिंध की टीम सिर्फ एक अदा के फासले पर है अपनी इस शानदार कामयाबी से। स्कोर्स बराबर हो गए हैं। सिंध की टीम को सिर्फ एक ही रन चाहिए। जरूर जितने भी सपोर्टर्स हैं सिंध के, वो इस वक्त बेताब होंगे इस लम्हे का। ये लीजिए सिंध सुरखरू, उमर बिन यूसुफ ने ये विनिंग शॉट खेला और सिंध ने पहली बार कौमी T20 टूर्नामेंट जीत लिया और उनके तमाम खिलाड़ी खुशी से फूले नहीं समा रहे। सऊद शकील जिन्होंने अपनी टीम के लिए लाजवाब फैसले किए, ये टीम बिलाशुबा हकदार थी और एक ऐसा फाइनल उन्होंने खेला जिसका फैसला मैच के पहले हाफ में ही हो गया था। एक चैंपियंस जैसी कारकर्दगी का मुजाहरा सिंध की जानिब से मुल्तान की धरती पर, और ये मुल्तान वो शहर है जहां लोग मुरादें लेकर आते हैं और इनकी जीत की मुराद आज की शब पूरी हो गई। बहुत ही आला, बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी और खुशी का ये अंदाज भी दीदनी है। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का एक हसीन इम्तिजाज। सरफराज को देखिए वो कितने जज्बाती नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा टाइटल है नहीं जो सरफराज ने ना जीता हो, लेकिन इस टाइटल को भी इस तरह एंजॉय कर रहे हैं जैसे ये उनका पहला टाइटल हो। बहुत ही जबरदस्त अंदाज है सेलिब्रेशन का। नेशनल T20 पहला टाइटल सिंध के लिए, और ये देखिए जहां ये टीम पहले दिन से यकजा थी, ये जीत के लिए खेल रही थी और खिलाड़ी एक दूसरे की कामयाबियों पर खुश होते रहे और बड़े अरसे के बाद इस टीम ने मुत्तहद होकर तमाम हरीफों का मुकाबला किया और आज एक यकतरफा फाइनल जीतने के बाद ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और सुहेल खान ने इसकी जीत की बुनियाद डाल दी थी अपने पहले स्पेल में, जो उन्होंने स्विंग बॉलिंग की और 2 विकेटें बैक टू बैक हासिल की और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। एक लम्हा खालिद उस्मान और उनकी टीम के लिए भी पूरे टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। फिर उनकी फॉर्म डिप हुई, लेकिन आखिरी लम्हे पे वो फाइनल तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब हुए। लेकिन आज की शाम उनके लिए कोई यादगार नहीं रही और उसकी वजह ये थी कि सिंध ने उन्हें तमाम ही शोबों में आउट क्लास कर दिया। वजह तौर पे इस मुबारकबाद के मुस्तहिक है सिंध की टीम और उनकी मैनेजमेंट। ये कहना ज़रूर होगा कि टूर्नामेंट के दौरान ऐसा नहीं था कि उन्हें मुश्किलें पेश नहीं आई, लेकिन उस मुश्किलात पर उन्हें काबू पाया और एक विनिंग कॉम्बिनेशन हासिल किया। शर्जील की परफॉर्मेंस, अनवर अली, आसिफ महमूद, पूरी लाइनअप में आपको मैच विनर नजर आएंगे। उमर बिन यूसुफ
सऊद शकील की कप्तानी, सरफराज का विकेटों के पीछे किरदार और फिर ऑन एंड ऑफ द पिच जो उनकी गाइडेंस थी नौजवानों के लिए वो काम आई और ये वो पतागर लम्हा। उमर बिन यूसुफ जो हैं ये T20 को भी इन्होंने अपनी शनाख्त बना लिया है। बड़ा अच्छा खेल उन्होंने पेश किया सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में। आसिफ महमूद एक बड़ा अच्छा इजाफा है ये सिंध की सफ़ों में और यकीनी तौर पर ये सिंध क्रिकेट का आगे चलकर नाम रोशन करेंगे। इनमें से जो बेशतर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने दिखा दिया है कि ये टीम जो है कितने पाए की है। 14.4 ओवर्स में ही उन्होंने 141 का हदफ हासिल कर लिया और ये आज प्लेयर ऑफ द मैच के भी उम्मीदवार होंगे। सोहेल खान, देखिए कितनी खुशी है, इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। ये इन खिलाड़ियों की यादगार तरीन रातों में से एक होगी। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें, ये मंजर खुद अपनी कहानी सुना रही हैं सिंध की खुशी की। पता का लम्हा सिंध के नाम और बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक गुलाम अली, सऊद शकील और उनकी पूरी मैनेजमेंट। जहाँ अनवर अली, उन्होंने भी अपना काम बड़ी खुशउस्लूबी के साथ किया, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। और आज उनकी बैटिंग की नौबत नहीं आई क्योंकि शर्जील और साइम अयूब ने जिस धुआंधार अंदाज से खेलना शुरू किया था उससे ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया सिंध का ट्रॉफी तलक। सऊद शकील 18 और उमर बिन यूसुफ 21 रन पर नॉट आउट वापस आए और ये एक आसान चीज साबित हुआ सिंध के लिए। केपी के पास ज्यादा रन्स नहीं थे, ऑल आउट अटैक गए अपने फास्ट बॉलर्स के जरिए, लेकिन विकेट में जितना पेस और बाउंस था उसका खातिर ख्वाह फायदा उस तरह उठा नहीं सके क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी थी। अरशद इकबाल ने 1 विकेट हासिल की, सरवर को 1 विकेट मिली, लेकिन एहसानुल्लाह आज 3 ओवर्स में 33 रन दिए, उन्होंने उस तरह कारगर साबित नहीं हुए। अब्बास आफरीदी भी महंगे साबित हुए। यहाँ ये आप देख सकते हैं सिंध की बैटिंग की झलकियाँ, जिनने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इब्तिदा में किसी हद तक परेशानी हुई थी पेस पर, लेकिन फिर सेटल हो गए दोनों ओपनर्स और उसके बाद उन्होंने खुल खेलना शुरू किया। साइम अयूब, उन्होंने सांस लेने की मोहलत नहीं दी और आड़े हाथों लिया इमरान जूनियर को और तेज रफ्तार बॉलर एहसानुल्लाह आए तो शर्जील खान उनके मुकाबले पर उतर आए। दोनों बैट्समैनों को रोकना मुश्किल हो रहा था। शॉर्ट पिच गेंद पर दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल रहे थे कि साइम अयूब आउट हो गए, वो टाइट दे बैठे अब्बास आफरीदी को, लेकिन शर्जील ने दूसरी जानिब अपना खेल जारी रखा। सऊद शकील ने उन्हें ज्वाइन किया और रन्स आते रहे विकेट के सामने भी और विकेट के पीछे भी। ये काबिल-ए-दीद कवर ड्राइव था और फिर ये शर्जील ने आज की शाम का सबसे बड़ा छक्का लगाया। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए शर्जील ने, मिस सेंचुरी मुकम्मल की और उसके बाद वो चल दिए पवेलियन, उनका पीटी ने कैच लिया। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी कैमियो खेली यहाँ उमर बिन यूसुफ ने, उनने दिखाया कि उन्हें क्यों इतना हाई रेट किया जाता है इस कम उम्री में और उन्हीं को ही विनिंग शॉट खेलने का भी एहसास मिल गया। ये लम्हा वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे अपने T20 करियर में। बिल्कुल, और सिंध की टीम अभी भी खुशियां मनाते हुए और ये लैप ऑफ ऑनर अपने तमाशाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए जो आज आए बड़ी तादाद में और इस वक्त बिल्कुल इलाही ब्रदर्स जो स्टैंड है उसके सामने से गुजरते हुए आ रहे हैं। यहाँ ये जायद महमूद जो हैं आपकी स्क्रीन के बिल्कुल बाएं तरफ, इनको भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी हीरोज में से एक हैं। दरअसल हर मैच में इनको एक नया हीरो मिलता रहा। साइम अयूब जो हैं ये टूर्नामेंट की सबसे बड़ी दरियाफ्त हैं, इनका टैलेंट दुनिया ने देख लिया है, इनकी कलाइयों में कितनी जान है इस कम उम्री में।
और सपोर्ट स्टाफ सरफराज अहमद वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यकीनी तौर पर ये नए सितारे आज उभर कर सामने आए हैं और चैंपियन बनने के बाद जो एहसास होता है यकीनी तौर पर उसका कोई नेमल बदल नहीं। और तमाशाई भी पल पल महसूस हुए इस मुल्तान की लग से। बिल्कुल जान डाल दी तमाशाइयों की मौजूदगी ने इस फाइनल में। सिंध ने पूरे ग्राउंड का लैप मुकम्मल किया। बिल्कुल मीडिया सेंटर के सामने से इस वक्त गुजरते हुए तमाशाइयों को वेव कर रहे हैं। बहुत ही यादगार फाइनल रहेगा। और जैसा आपने कहा दोनों उमैर जिन्होंने विनिंग शॉट खेला उसे याद रखेंगे। केपी की इनिंग्स 140 रन लग रहा था कि कम पड़ जाएंगे, लेकिन इतने कम पड़ जाएंगे ये नहीं लग रहा था उस वक्त, क्योंकि 141 का हदफ सिर्फ 14.4 ओवर्स में सिंध ने अबूर कर लिया। शर्जील और साइम की शानदार बैटिंग और उमैर बिन यूसुफ की फिनिशिंग टचेस और सिंध इस टाइटल की हकदार ठहरी। फाइनल जीता 8 विकेटों के मार्जिन से। तो फाइनल का फैसला हो गया और अभी इनामात की तकसीम होगी, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा। प्रोड्यूसर को बोलता हूँ। हाँ, वो फिर आप शुक्रिया अदा करता हूँ पीसीबी का। मुबारकबाद।
Hello and welcome to the post-match presentation of the final of the Kingdom Valley National T20 2022. And what a game we've had today. I think two deserving sides reached the final, but it was Sindh's day. And they outplayed their opposition in today's match and won this by 8 wickets. Big congratulations to the Sindh team. It's the first time they won it since the new system was introduced. Before I get on to the awards, and it's a long list of awards from the whole tournament, the Pakistan Cricket Board would like to thank its commercial partners for their invaluable support in making this year's competition a success. The Kingdom Valley National T20, Pakistan Cricket Board would also like to thank all law enforcement agencies and government departments for their support in making this tournament a success. Thank you so much. And last but definitely not the least, the Pakistan Cricket Board would like to extend its gratitude to the fans who've come in big numbers and supported the tournament throughout. Thank you so much. Also, Mr. Ghulam Hussain Shahid, he's chairman Kingdom Valley. He's standing right here. Would like to thank the fans who have come in big numbers. Would also like to thank the Pakistan Cricket Board for the partnership in the National T20. He's here. Along with him is Mr. Nadeem Khan. He's Director High Performance, Pakistan Cricket Board. Thank you for joining us. And Mr. Junaid Zia, GM Domestic Cricket Operations, Pakistan Cricket Board. Thank you to you as well. Now I'd request Mr. Junaid Zia, who will present the medals to the match officials. And we'll start off with the match referee in today's game, Mr. Iqbal Sheikh. Please step forward. And he'll receive his medal from Mr. Junaid Zia. Mr. Iqbal Sheikh, match referee. I'll request a special mention over here for a gentleman who's stood out there for 6 test matches, 46 ODIs and 17 T20 internationals. He was the on-field umpire standing in his last T20 game. A big round of applause to umpire Zamir Haider. Super career and a deserving career. Wonderful numbers, as I said, 6 tests, 46 ODIs and 17 T20 internationals. Then I'd invite umpire Shozeb Raza, who was the on-field umpire today in the final. After him is Mr. Walid Yaqub, the TV umpire. I request Mr. Walid Yaqub, the TV umpire, to please come forward. Receiving their medals from Junaid Zia. And then Mr. Imran Javed, the reserve umpire. Amir Afridi, the official scorer. Imran Javed, reserve umpire, took his medal. Amir Afridi, if he's here. The official scorer. Mohammad Atiq, the press scorer. And last but not the least, Zahid Bashir, the digital scorer. And that's Zahid Bashir, the digital scorer. Thank you, Junaid Zia. Now I'll request Mr. Ghulam Hussain Shahid. He will present the Kingdom Valley Player of the Final, a man who bowled 4 overs, 4 for 18, Suhail Khan. Kingdom Valley Player of the Final, Suhail Khan. He'll receive his trophy and check of 50,000 rupees from Mr. Ghulam Hussain Shahid. Wonderful performance. His figures 4 overs, 4 for 18. सोहेल से थोड़ी बात करेंगे. सोहेल, उमदा परफॉर्मेंस रही, शानदार परफॉर्मेंस रही. इस टूर्नामेंट में हमने देखा ओवरऑल भी आपने बड़ी उमदा की. थोड़ा सा अगर यहाँ आ जाए तो आप दिखेंगे भी अच्छे. हाँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही टूर्नामेंट में एज अ बॉलर. फाइनल के लिए क्या प्रिपरेशन की थी आपने आज? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि पहला तो मैं मैन ऑफ द मैच हुआ फाइनल में, और बेस्ट बॉलर भी अल्लाह का शुक्र है. दूसरी बात है कि प्लान ये था कि उन लोगों के जो बैट्समैन थे तो उन लोगों का पूरा प्लान किया था. जो गुल्ली भाई है हमारा कोच, उसके साथ रोज़ाना मीटिंग होती थी, तो उसको एक प्लान की तरीके से, बड़े प्लेयर थे, एक प्लान की तरीके से मैंने उसको मतलब पे पकड़ना था ताकि मेरे इन स्विंग आउट स्विंग जो मैं कर रहा हूँ तो उस पर वो लोग बिल्कुल रेडी थे, क्योंकि उन लोगों ने भी प्लान किया.
तो मैं उसको तरीके से पकड़ के जो अंदर बॉल लाता था तो उन लोगों को पता नहीं चलता, उस तरीके से उन लोगों की टीम हमने बड़े प्लान से आउट किया। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस नए बॉल के साथ भी और डेथ ओवर्स में भी आपने अलग अलग लेंथ से और स्पीड से बॉलिंग की है, तो डिफरेंट प्लानिंग रखते थे कि पुराने बॉल से क्या करना है और नए से क्या हिकमत अमली होगी? जी बिल्कुल, इन प्लेयरों के साथ मैं बड़े अरसे से खेल रहा हूँ, इन लोगों को वीक पॉइंट मुझे पता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास जो चीज़ है अल्लाह ने जो मुझे दी एक्सपीरियंस उसको मैं यूज़ करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। थैंक यू। Sohail Khan, the Kingdom Valley player of the final. Now I will request Mr. Ghulam Hussain Shahid. He will present the Kingdom Valley best wicket keeper of the tournament. And that trophy and cash award of 1 lakh rupees goes to the man with 13 victims and 209 runs, Sarfaraz Ahmed. Sarfaraz, the best wicket keeper of the tournament, 13 dismissals and 209 runs. Next award, once again, Mr. Ghulam Hussain Shahid will present the Kingdom Valley Best Bowler of the Tournament, trophy and cash award of 1 lakh rupees, 21 wickets, Sohail Khan. Brilliant performance throughout the tournament with the new ball and the older one. He'll receive the trophy from Mr. Ghulam Hussain Shahid and of course 1 lakh rupees check for his 21 wickets in the tournament. Now I'll request Mr. Nadeem Khan, who will present the Kingdom Valley Best Batter of the Tournament, trophy and cash award of 1 lakh rupees to the man who scored 429 runs, his highest of 102, Sahibzada Farhan. Super performance as an opener, his best 102. As I said, 429 runs. He will receive the check of 1 lakh rupees and, of course, the trophy. Now I'll again request Mr. Ghulam Hussain Shahid. He'll present the Kingdom Valley Player of the Tournament. And that's a trophy and cash award of 1 lakh rupees. Not so far away. 416, Saim Ayub. Superb performance as an opener, a young talent. And made sure that the side gets into the semis and then into the finals and win the trophy. Saim se baat bhi karenge. साइम एंजॉय कर रहे हैं अपने फॉर्म को और बिग मैच में भी ऑफ कोर्स जो प्रेशर होता है एब्जॉर्ब किया है अच्छा अप फ्रंट। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है और यही कोशिश होती है कि जितना प्रेशर हो उसको एंजॉय करके खेलें और कंडीशंस को जल्दी अडॉप्ट करके खेलें और टीम के लिए खेलें डोमिनेटिंग क्रिकेट, और ताकि उसी से फ़ायदा होता है। ये काफ़ी जिक्र हो रहा है, आपने ये नो लुक शॉट आपने डेवलप किया हुआ है, शॉट खेल के देखते नहीं है, ये कोई नई चीज़ आपने सीखी है और या इट जस्ट सूट्स यू, आपको मज़ा आता है? जी ऑब्वियसली क्रिकेट एंजॉय करने के लिए मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता रहता हूँ, तो ये भी मेरी एक अपनी एडिशन है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो मेरी फैंटेसी एक कह सकते हैं आप। ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि पिंडी से जब यहाँ आए अडॉप्ट करना पड़ा नई विकेट्स पे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस में कहीं उतार चढ़ाव नहीं आया, शानदार परफॉर्मेंस रही, कितना अडॉप्ट किया यहाँ आके, कितना डिफरेंस फील किया? जी बिल्कुल फोकस थे क्रिकेट पे और पहले दिन ही जब से मैचेस यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं तो कंडीशंस अडॉप्ट करी हैं और देखा है, उसको अडॉप्ट करके टीम के लिए खेला है और यही कोशिश थी कि डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलें, जो टीम को रिक्वायर्ड है उस लिहाज से खेलें, तो उसी का सिला मिल गया। चलिए, प्लेयर तो आप अच्छे हैं, ये बहुत से लोगों की नज़रों में भी आएंगे, वेल प्लेड, good performance, enjoyed your batting. Thank you so much. Saim Ayub, the player of the tournament for the Kingdom Valley National T20. Now I'll request Mr. Ghulam Hussain Shahid, who will present the Kingdom Valley National T20 runner-up trophy and cash award of 25 lakh rupees to Khalid Usman. The captain of KP will come forward and receive the runner-up trophy from Mr. Nadeem Khan, and he'll receive the check from Mr. Ghulam Hussain Shahid of 25 lakh rupees. Superb performance throughout the tournament. 5 out of 5 in Rawalpindi here. Not such a good run, but then made it to the finals. आज दिन थोड़ा सा अलग था केपी के लिए, ऐसा लगा नहीं कि कहीं में गेम में ग्रिप मिली हो? जी बिल्कुल ऐसा ही था। अब शुरू में हमारी विकेट गिरी है जिसकी वजह से मैच हमारे हाथ से निकल गया था। बाद में हमने कमबैक किया था, लेकिन एंड में फिर विकेट जल्दी गिर गई जिसकी वजह से हम बड़ा टारगेट सेट करने में नाकाम रहे। और क्रेडिट दूंगा मैं सिंध की टीम को, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है लाइन और लेंथ के साथ, और एक मौके पे हमें मतलब है कि अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो मैं क्रेडिट उनको भी दूंगा। इन हाइंडसाइट आप देखें, आपने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया था,
क्या प्लान था आपके माइंड में, क्या स्कोर लेके चले थे और फिर इवेंचुअली 140 हुए? असल में हमने एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया था क्योंकि नाइट का मैच था, बॉल स्विंग भी हो रहा था, लेकिन हमने वेवआउट बॉलिंग की है जिसकी वजह से, और स्कोर भी हमने 140 किया था। हमने 170 तक राउंड होता तो मैच बहुत अच्छा होता। फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा। पिंडी लेग बहुत ही शानदार थी, यहाँ के थोड़ा सा टेस्ट हुए, लेकिन अपनी टीम के साथ, अपने लड़कों के साथ काफ़ी मुतमईन है क्योंकि सीज़न लंबा है। जी बिल्कुल, मैं क्रेडिट दूंगा अपने कोचिंग स्टाफ को और जितने हमारे मैनेजमेंट में बंदे हैं और टीम प्लेयर है, यंग प्लेयर है सारे माशाल्लाह, और जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, इधर आके कंटिन्यू 4 मैचेस खेले हम फाइनल के साथ, और लेट डाउन नहीं होने दिया, और पॉजिटिव ये लेके जा रहे हैं कि इसमें एहसानुल्लाह ने खिलाया है एक हमारे, और बैट्समैनों में रेहान अफरीदी विकेट कीपर हमारा है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी टीम मैनेजमेंट का। लगा तो 2 साल से चैंपियन रही आपकी टीम, लेकिन इस बार कोई ना कोई ट्रॉफी तो लेके जा ही रहे हैं, रनर अप ही क्यों ना हो। वेल प्लेड, एंजॉयड केपी स्टाइल ऑफ गेम, और आगे आपके लिए गुड लक। शुक्रिया। Khalid Usman, the captain of KP, picking the runner-up check of 25 lakhs and, of course, the runner-up trophy. Now I request Mr. Ghulam Hussain Shahid once again to present the Kingdom Valley National T20 Champions Cash Award of 50 lakh rupees to Saud Shakil, the captain of Sindh. He'll receive the trophy and, of course, the check of 50 lakh rupees. First, the trophy, which they've been fighting for in the matches, 10 games in the round, and, of course, the semi-final and final. I also request him to present the check of 50 lakh rupees to the champion team and their captain. Saud से बात करेंगे इससे पहले कि he joins his team and celebrates. So पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही इंडिविजुअली एज अ टीम ऑल्सो। थोड़ा सा अपने इस जर्नी का बताएं, एज अ कैप्टन कैसा लगा आपको इस नेशनल T20 में टीम को लीड करना, और फिर ऑफ कोर्स ऐसा एक्सपीरियंस के ऑल बिग फाइनल में और एक पिछले 2 साल से चैंपियन टीम को खेलना? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। काफ़ी बड़ी विन है हमारे लिए एज अ टीम, सिंध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विन थी है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है एज कैप्टन, सिंध को लीड कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। मिक्स ऑफ सीनियर्स एंड यंगस्टर्स आपकी टीम का हिस्सा थे, परफेक्ट बैलेंस क्रिएटेड था। आपके टीम से साइम मयूद ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसके जो स्टार्ट्स आपको मिल रहे थे और टीम कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। जिस तरह मेरा ख्याल है साइम इस टूर्नामेंट में खेला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला। अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरी टीम हमें जहाँ रिक्वायर्ड था सब अपना अपना काम वहाँ पे कर रहे थे, और आपने जहाँ सीनियर्स की बात की वहाँ सीनियर्स अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे थे। जिस तरह सरफराज भाई, अन्नू भाई मेरे साथ पूरा वक्त खड़े रहे। इस तरह आप जूनियर्स को देखें, जिस तरह साइम अयूब खेला है, फिर उमैर यूसुफ खेला है, आसिम महमूद यहाँ पे बीच में हमें इसने आखिर में आके हमें बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। जाहिद महमूद की कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बीच में मैचेस जिताए। तो ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ जो रिक्वायर्ड था एज अ टीम, एज अ कैप्टन जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मेरे बॉयज़ ने मुझे डिलीवर करके दिया। इस मैच की जरा सी बात कर लेते हैं, देन आई लेट यू गो टू योर टीम। अच्छी बॉलिंग की आपकी टीम ने और रिस्ट्रिक्ट किया उनको 140 पे, लेकिन फाइनल्स प्रेशर गेम्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने कहीं ढीला नहीं छोड़ा। मेरा ये बिलीव है कि आप अपना प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आउटकम का मुझे कभी भी वो मसला नहीं होता, आउटकम आपके हाथ में नहीं होता किसी भी टाइम। पहले दिन से हम एक चीज़ फॉलो कर रहे थे, हम अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे टीम में, तो बस कोशिश कर रहे थे उन्हीं को अच्छे से निभाएं ताकि रिजल्ट हमारे फेवर में आए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आखिर में जीत गए। ओके, Sindh, the champion of 2022 of the Kingdom Valley National T20, deserving trophy for Saud Shakil and his men, and Sindh, of course, their support staff, their head coach, everyone. Congratulations, and that also concludes the presentation. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. यहाँ सिंध की टीम हकदार थी चैंपियन बनने की, और ये चैंपियन क्रिकेटर्स हैं। अभी कप्तान ट्रॉफी लेकर आएंगे सऊद शकील, जिनकी कप्तानी का बड़ा अमल दखल रहा अपनी टीम को यहाँ तक लाने में। इब्तिदा में कुछ लो स्कोरिंग मैचेस खेले थे सिंध ने, लेकिन उसके बाद यूं यूं ये चैंपियनशिप आगे बढ़ी, इस टीम के असल रंग सामने आना शुरू हुए। वो अच्छे ऑलराउंडर्स के होने से टीम ज़्यादा मुतवाज़िन होगी। आसिफ महमूद, अनवर अली, साइम अयूब,
साद खान इब्तदाई मैचेस में इनकी भी कारकर्दगी आला थी। सीनियर क्रिकेटर्स ने भी अपना किरदार जो है खुश उसलूबी के साथ निभाया। तो अब इस नेशनल T20 का 2022 से इतना ही। तारिक सईद को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये काविश पसंद आई होगी। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर।